Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Okay. So, do you people have any doubt? Aman, you have any doubt? You're raising your hand. Okay. Share screen. Can I share screen? Share your screen. Good evening, Shiva. Ma'am, this is the problem. This is the question. Okay, let me read the question once. Reverse an array. Is this the question? Okay. Yes, ma'am. And I have written this code. Okay, the main function is already built in GFG. You are doing this question on Geeks for Geeks, right? Yes, ma'am. This is some other ID or what? Because main function is already written on GFG. Ma'am, it Is not there any there in this. specific error? Can you show me the specific error? Ma'am, test cases are not. One test case is running, others are not running. Okay, let me see. Let me see whether it gives some error or not. Because This is just running. just wait for a minute. Okay, so test case is working. So let me see what is the error. Temp equals to 0. Array can start equals to 0. Then end equals to array dot length minus 1. So basically, array of start your array of end equals to temp, then start plus plus end minus minus. And for I tx equals to 0, it is just system dot out of print. It is also correct. It seems to be correct. Like, what are the test cases which are failing? If I Submit it once. Possibly your code does not work for. Okay, it passed only one test case. So let me see. You are taking integer array as input, then taking this as input. Okay, dual size. Then you are reversing the array. For reversing, in temp equals to 0. Let me see the question. Let me see the question once. It's the same question because reverse in array, if it is given an array of size, and print the reverse of it. So basically 1 and 4, 2 inputs they are giving by. And this is number of test cases. Achha, number of test cases. And number of tests. Okay. You haven't dealt with the number of test cases. Like if there is only one test case, then one input will be there. While if there are 5 to 6 test cases, then what will happen? Tell me. Will your code be able to cope up with 5 to 6 test cases? Tell me. No, if I am giving this value, I'm given this value, this one, then it will only work with one test case. Then only it will work. What if instead of 1, I give you 5? It will need 5. No, it will not work 5 times. It will not work 5 times because you haven't looped yourself. So instead of this, after you have taken number of test cases, then you need to take a while loop. And in while loop, you can put like test minus minus greater than 0. After test, line number 27. After line number 27, take a while loop. Okay. In that, you write test minus minus greater than 0 and 1 braces at last, line number 35. It is why, because if you are provided with 5 test cases, then in that case, what should happen? Your code should give answer for all the test cases, right? So for that purpose, you will be looping. Instead of while loop, you could have also used for loop. Okay, no problem. Now, like print, like execute it.
Again, same thing. Yes, ma'am. Let me see. It is not passing even. Have you compiled it once? Yes, Have you? I have compiled this after taking this input and I have pasted it in custom input, then it is also passing that. Okay, let me see. But now it should work. And size you are taking after taking test cases, you are taking that many number of size and arrays. Or do one thing in between this line number 13 between put a space like you have congested everything into bracket Okay. and array name. Here, Like no. हाँ in initialization part. हाँ इसमें array और brackets के बीच में just put a space. Let me say IDX equals to 0, IDX is lesser than size. R of IDX is equals to S of next int. It seems to be correct. And then like reverse wala show me. yeah. Scroll reverse वाला up. है। Reverse wala. Void reverse array. In that also you are doing the same thing. Put a space because it causes confusion sometimes. Not in the parameter part. Line number 8. Number 8, लाइन नंबर 8 में जो इंटीजर पास किया है वहां पे Okay. स्पेस एक दे दो हाँ, अभी temp equals to 0 नेक्स्ट टाइम अभी तो it seems fine in start equals to 0 end equals to array dot length -1 then start is lesser than end you are taking it in temp and then swapping both of these now it seems to be correct run it for once just run don't submit okay let me see what is the output it is giving the correct output. it gives correct if I put that. Put that Do test like case write here. a custom input. I have Okay, you have given written this some also. custom input here. If I submit this, it will give correct output, but it is not submitting. No, just run for this custom input. Run for this custom input. Sure. What is the answer? Input is too large. Okay. No, this is the output, this is expected, which is correct. This code is like correct and question. I don't know why it is expected output 24-0. Same thing तो आ रहा है कोई difference दिख रहा है क्या? नहीं है ठीक है बिल्कुल सही है क्यों? सेम आउटपुट है मैम जो होना चाहिए Exactly. Then also it is GFC पे होता है वैसे कभी कभी कि आप correct output आते हैं then also they show wrong error but let me because नहीं, everything link is आपको share correct. करो। हाँ लिंक शेयर कर दो और कोड भी एक बार मुझे शेयर कर दो एक बार मैं खुद देख के करूंगी कि लाइक व्हाई इट इज सो ठीक है यहीं पे कर दूंगा शेयर नहीं स्लैक पे मैसेज कर दो पर्सनली मैसेज करना ठीक है Okay. नॉट ऑन ग्रुप स्लैक पे कर देता हूँ हाँ स्लैक पे पर्सनली करना ग्रुप पे नहीं ओके मैम थैंक यू okay because the code is correct okay many times I have also faced this situation कि my code is correct and custom inputs are also correct but then also GFG shows wrong answer so I think this might be the case but then also I'll see okay ओके so any more doubts नो okay you can stop sharing your screen any more doubts anyone anyone having any doubt can ask no doubts nobody has doubt write in the chat at least if you don't have any doubt am I audible okay so if you don't have any doubt please write in the chat so that I can proceed with some other things or any question
Ma'am, may I share the screen? हाँ, share your screen. Screen visible है? हाँ. So like दिख- was string started in yesterday's class or String अभी तक नहीं स्टार्ट किया मैम. अभी string start नहीं किया तो matrix ही कर रहे हैं क्या? Like some more हाँ. questions are added or what? हाँ, ऐड किए हैं 2-3. अच्छा अच्छा. So you are asking question from string. Okay. Yes. Given a Right. string, generate all the rotations of a string. And see geeks is there, so we need to print geeks. Just scroll down, scroll down. मैम रोटेट ही करना है बस. हाँ हाँ. ये यहाँ डालना है, यहाँ डालना है. किस मैनर पे रोटेट करना है? रोटेट Next. राइट. रोटेट Yes. राइट. ओके. तो मैम ये हमने जैसे सब स्ट्रिंग वाला किया था ना, वैसे ही ट्राई कर रहे हो पर वो हो नहीं रहा. Let me see what you have done. Let me first analyze the test case. Let's suppose geeks is there. So first of all, geeks will be there, then S, and then everything like substring of it. Then KS, and then rest of the part of the string. Then EKS. Okay, I got it. Now show me the code. अभी ये वाला मैंने बाद में ऐड किया. अच्छा. Let me see. IDX equals to 0. What is this? Acha, string plus string. That is correct. String plus string. Temp you have taken here, na? तो Yeah. string लिया और string plus string कर दिया, फिर size ले लिया str.length. Okay. I is lesser than size plus idx. Size plus idx. Like अगर substring ही लेना है तो we can do the same thing without taking temp also, right? अगर substring ही लेना है तो but मैम what you are रोटेट doing कैसे is होगा? also like substring लेना है ना तो एक index रख सकते हैं last पे, like 2 pointers kind of thing ले सकते हैं. हाँ. And then take substring. ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, but since you have taken temp, we can do by this way also. तो size equals to str.length लिया, ठीक है. फिर idx equals to idx lesser than size plus idx. Size मान लो geeks है तो 5 plus 0, ठीक है. फिर jdx equals to idx और jdx is lesser than idx plus size. Okay, this also lesser than 5. Then you are printing str.substring. kdx कहाँ से आ गया? नहीं, इधर JDX है. अच्छा, jdx is like starting from 0, take up to size. Okay, that is correct. In the next iteration, jdx will get updated and it becomes idx plus 1. But in this case, it doesn't. It is not valid. So idx will be updated. idx becomes 1. Now idx becomes 1 and idx is lesser than size plus 1. ठीक है, तो like geeks is there. तो EEKS और G हो जाएगा ना? मैम वो विंडो आगे आगे जा रहा है, मतलब हाँ, लॉजिकली वो तो ऐसे जाना चाहिए पर वो नहीं हो रहा है प्रिंट. logically window ऐसे जाना चाहिए. EEKS like geeks is there. So हाँ. EEKS और G आएगा. तो is the second expected one is G? Like EEKS G, tell me. Show me the EKA. EEKSG. नहीं, it is not expected. Whatever, like what your output is coming is the fifth one, right? According to this, the fifth one will be coming at second, right? Yes. But what is expected? SGEEK is expected. मतलब कि you have to start from backwards. Question शायद you अच्छा. understood wrong. हाँ, ठीक है. That's why. मैम पर उल्टा भी नहीं हो रहा है ना? अच्छा, उल्टा भी नहीं हो रहा है. हाँ, ये ऐसे देखो. हो रहा है ट्रायंगल टाइप. अच्छा, substring एक ही लिया क्या? Show me the code. str.substring क्यों लिया? temp.substring लिखना है ना यहाँ पे, line number 14 में. हाँ. Now try.
ये तो बहुत ज्यादा ही प्रिंट हो गया. Like if you are using the same thing, then what is the need of second loop for JDX? मुझे ये नहीं समझ में आया. मैम पहले तो वो No पहले need वाला of remove this JDX loop. अगर आपको reverse print करना है like what you are saying, तो ये Okay. JDX की जरूरत ही नहीं है. IDX से start करके size plus IDX तक try, because JDX बार बार looping. Okay, bracket एक extra हो रहा है. हाँ, Got हो रहा है, उल्टा हो रहा है. Got it? Hmm. Did you realize that using two loops will be like wrong in this case? Yes. Because it was looping in J also, but that is not required, right? मैम आई थॉट कि वो लूप में एक और लूप वो सब स्ट्रिंग की जैसे करना पड़ेगा, सब एरे जैसा. अभी आपने इतना सोच लिया ना, बस इसको थोड़ा सा और सोचिए तो यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन आल्सो. यस. पॉइंटर्स से ही कर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? ओके. Okay. Any more doubts? So like yesterday, what was done in the class? Can someone of you please unmute yourself and tell me? What questions were covered? Let me see the classwork link. What questions have been added? क्वेश्चन तो बहुत ऐड हुए हैं और यस्टरडे मैट्रिक्स ही किया. अच्छा, ठीक है. यस्टरडे हमने क्वीन वाला क्वेश्चन किया था. अच्छा, एंड क्वीन बैक ट्रैकिंग से. अच्छा, क्वेश्चन क्या नहीं. था? बैक ट्रैकिंग वाला था कि दूसरा? बैक ट्रैकिंग नहीं था, बस चेक करना था कि कोई क्वीन है या नहीं. नो सेफ जोन ट्रैक करना था. सेफ जोन है अच्छा नहीं. अच्छा, सेफ स्टेट. तब तो वो सिर्फ लाइक चेक कर लिया होगा कि उसके डायगोनली उसके रो अलोंग कहीं कोई दूसरी बस क्वीन उतना ना ही हो, चेक right? करना था. The question was true. क्वेश्चन These 20 questions पे. were tic tac toe. This question, let me see. मैम ये वाला हार्ड है. अच्छा ठीक है, देखने को. तो क्वेश्चन स्ट्रिंग कब स्टार्ट होगा? अभी मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वी के. सो आफ्टर वी डू दोस क्वेश्चंस, then string will be started. Let me see this question. Tic-tac-toe is a pencil and paper game. ये तो पता है. Extend rotate strings and succeeds. The top left position. Here is an example. मैम और ये क्वेश्चन गलत भी है. Okay, let me see. Your code is run alternately with the opponent block for every move. Question में पूछा क्या है? ये तो लिखा ही नहीं. कहाँ लिखा है? Next move takes in a char player and the 3x3 board is an array. Complete the function to print two spaces, space separated integers R and C. To print R and C, which denote next move. ये कैसा क्वेश्चन है? लाइक एक्स को प्लेस करना है और ये 3x3 का बोर्ड है, तो किस तरीके से प्लेस करना है कि ओपोनेंट जीत जाए या खुद? वो तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं. कहीं भी रख दो एक्स को उठाकर. यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं. तो प्रिंट क्या करना है? ऐसे पता नहीं क्या क्वेश्चन. हाँ, एआई का ही क्वेश्चन है. प्रिडिक्शन पूछ रहा है तो एआई का ही क्वेश्चन है, राइट अंकित? Okay, I think they have, पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन कर रहे हैं, but let's see other questions. And queens check, right? Only this question was done in yesterday's class. Tell me. No other question? Okay. This is like, did you understand this question or you have doubt in this question? Others? If anybody has doubt, they can ask. Nobody has doubt in this question? Okay. So other questions we haven't done. 1, 2. Achha, this question is already done, such an assorted matrix. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions are remaining. Okay.
So if you people have any doubt, you can ask me. Madam, I have doubt in test question. One This test question? Test question. It's a test question. Huh. Which question? Oh, swap even and odd Okay. rows of matrix. Share me the test link. Share me the test link. Okay, 1 minute. Someone of you, please share me the test link. Okay, it was contest 9, right? Yes, ma'am. Yes. Okay, I got the link. So this is the question. Swap odd even rows of a matrix, right? So in this question, swap the elements in the even row with the corresponding elements present in the odd row just after it. So you will be given a test cases in area. So let's say in the input what they will be giving, M will be given, N will be given, and then M cross N matrix. Let's suppose this is the matrix given, okay? Something like this. So what you need to do is, when you came to first very row, the row number here will be 0, right? Row number 0, it is row number 1, it is row number 2, like it is 3, and it is 4. Since 0 is an even numbered, you need to swap this row with the next row. Obviously, if it is even, the next row will be odd, right? If 0 will be even, then 1 will be odd, right? So you need to swap all these corresponding elements, all the odd, like whatever elements come in the even number row, you need to swap it with the odd number. So what you have to do in this case, 4 and 2 will be swapped. So 4 comes here and 2 comes here. Similarly, 3 and 5 will be swapped. So 5 comes here and 3 comes here. Similarly, 7 and 4 will be swapped. Then what you need to do is, after you swap all these, now you need to move to the second row. You move to the second row because next or even row will be 2. After 0 was the even row, next even row will be 2, right? Abhishek? Yes, ma'am. So now you need to move 2 ahead. So like how will you increment your row in the loop? By 2. Okay. After you come here, you need to check whether it's I plus 1, like row plus 1 exists or not. If it's row plus 1 exists, then you need to swap, because 3 exists. So you will swap the corresponding elements. So 6 and 1 will be swapped, 7, 0, 8, 2 and 9, 3 will be swapped. Now you will move to the next, move ahead by 2 and you come to the 4th row, right? While coming to the 4th row, you will check if 4 plus 1, that is 5th row, exists or not, because we have to find the odd row next to it, But since 5 does not exist, like 5th row does not exist, so we will leave as it is. Okay. Did you understood the question? Like, is the question clear? What do you have to do in the question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. So should I code it? Yes, yes. Okay. So you have to take M, in which, like in the input format, you can see that you have to take M and N, which will be denoting the size of row and column. Okay.
Then you need to take the number of columns. Then you need to form a matrix of size. M cross N. Then you need to take inputs for all these positions, like for each row column value. Matrix of IHA will be equals to SC dot next int. Next, you need to print. Let me see the output. Print the output accordingly as shown. Make sure to use tab to separate elements. So they have mentioned in the question that to separate the elements of the matrices, you need to use tab spaces. Okay. So let's call a function which will be printing the same. Let me name the function print odd even. In that, we'll be passing matrix and M and N. So next, I'll be forming the function. मैम Yes, मैम पैलिंड्रोम हम इवन रो का हो सकता है क्या, मतलब 6 अगर एरे का साइज रहेगा तो 0 palindrome. 5, हाँ 0 5 1 4 2 3 ऐसे पैलिंड्रोम होता है क्या? Palindrome, like definition क्या होता था palindrome का? मैम उल्टा किया क्या? तो भी सेम रहता है. हाँ, उल्टा किया तो सेम रहेगा. तो इसका palindrome कहाँ है इसमें? Like it is not palindromic. इसमें नहीं मैम, हाँ, ऐसे ही जनरल पूछ रहा हूँ मैम. लाइक हो 1 2 सकता है. 3, लाइक 1 बस 2 3. palindrome में ये होता है ना कि जो भी चीज like string, if you're talking in terms of string, so on reversing the string, like obtain string and the initial string should be same. So this is the scenario there. तो odd हो चाहे even, it does not matter. ओके. So next, what you need to do is you need to swap. You need to take your loop for row, which will be initially 0 because the first even row will be 0, right? Whosoever asked me this question, please concentrate. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Plus equals to 2. And how you need to increase your row? By 2, because you have to swap all the odd and even ones. So the next like even would be row plus equals to 2. Next, you will be taking the column values, which will be initially from 0, and it will like rise plus by 1 only. Okay. Before this, you need to check if the row plus 1 exists. If the row plus 1 exists, then only you need to like go on for swapping. Otherwise no, as I showed you in the example. Okay. So let us add a check. If row plus 1 is lesser than M, then only go for doing the same, like swapping. And what you need to swap? You need to swap the matrix. What indexes you need to swap? Tell me. You will have to. Okay, I'm just writing the coordinates because we don't have much time left. So I'm just writing what indexes you have to swap. Okay, so you need to swap matrix of row column. With what value you have to swap it? You have to swap it with matrix of row plus 1, right? Because row plus 1, if row is even numbered, then row plus 1 will be odd numbered, right? Yes. So then you need to swap this. I'm not implementing the swap function. I hope you will be able to do this by yourself. Swap function, right? Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like if you do like this, just passing this won't like do this, but you have to implement int temp and all, whatever you do.
and the rest of the code will be same, and then you just need to print the like modified matrix, right? Okay. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Did you get this, Abhishek? Yes, ma'am. Okay. Right. Okay, if you are not able to do, you can ask me tomorrow also. Okay, no Okay, problem. ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, great.
ठीक है, आई एम ऑडिबल? Am I audible? Yes. Okay. So let us start. Should we start? Has everyone revised the yesterday's question tic-tac-toe? Sorry, not tic-tac-toe, but N queen problem. N queen. Has everyone revised N queen? Okay, so today's problem will be crossword 1 and crossword 2. And if time remains, so we can also discuss count on palindromic rows. So like I am telling you the schedule, you can say, or the remaining course. Should I tell you the remaining course? Like daily you ask me, so I just confirmed with Geekshare. So they are telling that till 30th October, like on 30th October, your second MCT will be there. On 30th October, your second MCT, MCT 2 will be there. That is your module 2 will get completed by 30th October. All the topics remaining, which are strings, which are binary search and all. After this module 2, and also there is modular arithmetic also. So topics which are remaining are strings. Some 2-3 questions of metrics are also remaining. Most probably today or tomorrow they will get finished. After strings, there are binary search topics. And there is the modular arithmetic topic. Modular arithmetic. Okay. After this module 2, there will be module 3, which will be starting from November onwards. And most probably, like they have told me that it will run for 30 days, but it might go to 40-45 days also. Like it is in between 30 to 45 days. So your course will end in between like mid-December. It will end in mid-December. Is it clear? Is it clear? In module 3, there will be object-oriented programming. There will be OOPS in Java, object-oriented programming in Java. And there will be like the part of object-oriented programming that is nothing but collection framework. You can say linked list, stack, queue, and all of this. Like basic idea, not in advance, because in advance, if you want to learn, you have to join the elite batch. But in basic idea, I can say you will be getting the basic idea of collection frameworks in the module 3. Stack, queue, linked list, and all. Stack, queue, linked list, hash map, heap, and maybe also recursion. I am not sure about recursion, but maybe recursion will also be there. Let's see what will happen. So this is the curriculum. This is the remaining, you can say, schedule. इसके बाद जॉब तो अभी लग जाएगी. अभी बैठना स्टार्ट करो, आधी कंपनीज में जॉब लग जाएगी. मतलब आधी में कह रहा हूँ, अगर 20 कंपनी में बैठोगे तो मे बी 1-2 कंपनी क्रैक हो जाए, क्लियर हो जाए. हाँ, टोटल टाइम अप्रॉक्स 4 मंथ्स मान सकते हो. 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स का कोर्स जा रहा है इन टोटल DSA का. Okay, so read the problem crossword. You are given a matrix of characters. There will be a matrix of characters and there will be a string word given to you. The target will be given to you and you have to check if the word is present in the matrix or not. Word can be in any of the following directions. It can be horizontal. It can be vertical, left to right, top to bottom, or it can be any of the diagonal, maybe from top right to bottom, top left to bottom right, or maybe from, you can say, top right to bottom left. So it can be any of the diagonal. For example, if this is the matrix,
if this is a matrix of 10 cross 10, 10 rows, 10 columns. So 10 is the input, that is the number of rows and the number of columns. It is a square matrix. And there will be a word given to you, which is green. So you have to search for green, whether it is present or not. Crossword. Crossword to kheli hogi sabne? Has everyone played crossword? Yes or no? Yes. So this is nothing but crossword game. You have to search for a word. How can you search? You can search it horizontally, you can search it vertically, you can search it any of the diagonals, like this diagonal or this diagonal. But it should be from top to bottom. It cannot start from bottom, it cannot go upwards. It should be top to bottom only. So for example, in this green, what I will do? I will search for the first row, whether there is green. No, there is no green. In the second row, no, there is no green. In the third row, no, there is no green. Fourth, no. Fifth, no. Sixth, you can say again, no. Seventh, no. Eighth, no. Ninth, no. And finally, in the 10th matrix, in the 10th row, you can say, yes, there is a green matrix. Yes, there is a green, you can say, in the row, in the horizontal level. Maybe if what you have to search, if instead of green, you have to search for, like, maybe the search was not of green. For green, we can say it is horizontal. For green, it is horizontal, like this. Or let me just shade this. So green is this. Okay. Instead of green, if maybe the search is brown. So what should we have to do for brown? What should we do for brown? What should we do for brown? Search row wise, then search column wise, then search diagonal wise. See what I am saying. Can brown start from W? Should I basically start our traversal from W? That W, do you have brown in horizontal, in vertical, in diagonal? Obviously, brown should start from B only. So if there is W, we cannot say that this is starting point of brown. This is not the starting point of brown. This is not starting point of brown. No, 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 no. All these are no. This might become, see, this B might become the starting point of brown. How? Maybe search for right words. Is there R now? No, there is no R. So there is no brown here. Is there R here? No, there is L here. So again, no. In vertically also no. Is there R here? No, there is P. So, and also is there R here? There is no R. So in these 4 cells, I have to check where the next cell. That is, either it can be like this, horizontal. It can be like this, which is, you can say, diagonal. It can be vertical, or it can be anti-diagonal. These kind of words can exist in the matrix. So brown is not starting from this B. Now let's search for any other B. Let's try for this B. So B is there. R is also there vertically, sorry, horizontally, but O is not there. Let's try for vertical. B is there, but R is not there. Let's try for diagonal. R is not there. Let's try for anti-diagonal. Again, R is not there. So for this B also, we cannot start our brown from this B. Although there was BR, but entire word should be there. Let's start from any other B. So let's start from this B. So vertical, sorry, horizontal. There is obviously no R. There is nothing to the right. This is the last cell. There is nothing to the right. Let's try for vertical. B, R, O, W, N. Yes, there is brown. Yes, there is brown. So brown is found. So brown is found, which is vertical. Is it clear about brown? Yes. This was horizontal in the last row, and brown is vertical in the last column. It is vertical in the last column. Let's try for any other word. Is there any word which is diagonal? Is there any word which is diagonal? Can you have any word which is diagonal? Cat is there. Where is cat? Here is cat. Okay. So let's try for cat. Let's try for cat. Let's search for cat. So in order to search for cat, it can start from here. If it is horizontal, A should be here. No. If it is vertical, A should be here. No. If it is diagonal, A should be here. No. If it is anti-diagonal, A should be here. Again, no. So we cannot start cat C from here. We cannot start cat from here. Let's try for any other C, any other C, any other C, any other C. Is there any other C? Yes. So can we start from, like, can we go horizontally? A is not there. Can we go downwards? No, A is not there. Can we go anti-diagonal? No, A is not there. Like, there is nothing. Can we go diagonal? Yes, A is there.
Again, diagonal. Yes, A is there. Sorry, T is there. So yes, the cat is found. So cat is found, which is diagonal. Cat is diagonal. Any other word? Any other word which is anti-diagonal? Any word which is anti-diagonal? Orange is there. Where is orange? Where is orange? फोर्थ रो में है ऑरेंज. फोर्थ रो में. फोर्थ रो में ओ ठीक है. ये तो वर्टिकल हो गया. वर्टिकल के अलावा what orange is vertical. Any other thing? Orange is vertical. Any other word which is anti-diagonal? Word can be along big diagonal wise from north west to southeast or northeast to southwest. Yes. Any other which is anti-diagonal like this, like this? Any word which is anti-diagonal? Okay, sit is there. Geo is there. Where is sit? Where is a sit? Let's search for sit. Like let's do the traversal. Can we start S here? No, obviously it is not S. Can we start S here? So no, I is not there. Is I here? No. Is I here? Yes. Is a T here? Yes. So sit is found. Sit is found. So sit is there. So these are the 4 types of word we can search. These are the 4 types of word we can search. Is it clear? Whether vertical, whether horizontal, whether diagonal or whether anti-diagonal. But it should be from top to down and left to right. It cannot be like right to left. It cannot be SOOU, like from right word to left word. It cannot be from right to left. It can be from left to right only. So how to search? How to search? If we know we have to search in 4 directions, how we have to search for any element, for any word? See, n-queen problems. Do you everyone remember n-queen wala logic? Yes. Very good, Ankit. N-queen. Do we have to travel in the same way in which we did n-queen? That is down left, down right, or down or right in these 4 directions. What are those 4 directions? This is nothing but right. Vertical is nothing but down. Diagonal is nothing but down right. Down right. And anti-diagonal is nothing but down left. Anti-diagonal is nothing but down left. So these are the 4 directions we should start searching for. So should we start the coding? Like this is what we have to do. We have to search for S. If S is found, should we now search for the next character? Yes or no? If S is found, if we have to search for sit, if S is there, so in order to search in diagonal or maybe in anti-diagonal or maybe horizontal, maybe vertical, in any of the 4 directions, next character to be searched will be the next index I plus 1. Yes or no? I plus 1. Next index will be searched. So what we are going to do? We are going to have a function which will be searching in diagonal, anti-diagonal, row or column. This is 4 functions we will require. I am writing 4 functions for now. One function will be public static boolean, whether there is a element starting from my current cell, or let's have a unique function, same function only, in which we will write all the 4 functions. So public static boolean is a word present, where I will be passing the matrix, and matrix is of character type. It is a character matrix. And I will be passing what? I will be passing the row and column from where I should start, the traversal, where the first letter is present. So what I am saying, see, I am saying I can go in horizontal direction, that is rightward. I can go in vertical direction, that is downward. I can go in horizontally right, or you can say down right, which is like this, down right, and finally the 4th direction will be down left. These are the 4 directions in which you can figure out the word if there is word present, and we have to also pass the word also, that which word we have to search for. So we will pass the word also. So string, we will pass the word.
we have to search. If in any of the 4 directions, if the word is not found, so return false. Return false. Is it clear? This is a word present function. Is the word present? See, in the main function, what we are going to do? How to take character as an input? How to take character as an input? Anyone remember? No. I am saying scanner. SCN is equal to new scanner. System.in. How to take a character matrix? First, obviously, you have to take the size of matrix. So size of matrix will be n. Now let's create the 2D matrix, crossword matrix, you can say, which is of n cross n, square matrix. And what you have to do, you have to take each cell as a character input. Each cell will be a character. It will not be a string. It will not be an integer. It will be a character. So for int index is equal to 0, index is less than n index plus plus, or you can say row is equal to 0, row is less than n, row plus plus. And similarly for int, column is equal to 0, column is less than n, column plus plus. Okay, how to take matrix of row, comma, column as an input? How to take a character as an input? Equals to what? See, if we will do next line, it will obviously take the entire line. And if we will do next line dot char at 0, it will take the entire line and then take w. But next input, it will take dr, ti, whatever. So it will like skip all these. So what you have to do, we have to take only one word, w, and extract the 0th character, w only. Then take the next word, c, extract the 0th character, c only. There is only one word, only you can say one word of one letter only, and we are extracting that one letter using char at 0 function. So next word, take the input r, store it in 0, 2, and do not store the string because input will be string. scn.next will be string. So how to take the character from that string? We can say str.char at 0, or you can say scn.next dot str dot char at 0. So scn.next, it will give you the string. It will give you the string. You will take the string as an input. You cannot directly take character as an input. After you have done taking the string as an input, now extract the 0th character from it. That is the only character. Like according to the input, there is all the words have only one character. W is a string of only one character. C is a string of only one character, which is C. R is a string of only one character, which is R. So this is how you take an input. Is it clear? Is it clear? After we are done with the input, we will also take the string, which is the word we have to search for. The word we have to search for. So for that, what we have to take, how the input will be taken? The word which we have to search for. You can take using next line. You can take using next. It is your wish. You can take it any way you want. I am taking next. You can also take it using next line. Okay. Now what I'm going to say, it can start from any letter. We can start this word from any letter. So we will again run a similar loop. This similar loop, we will again run a loop, and we will ask to each character. We will ask to each character that is my word starting from your character. Is the word present? Is the word present? Is my word starting from your character, your index? If my word is starting from your index in any of the directions, horizontally right, vertically down, down right, down left, any of the directions, if it is true, so I can say I have found the cell, so answer will be true. System.out.println true. And I have to print true only once. So what should I do? If true is present, like if the word is present, if we have found the word, so what should we do? We can simply return. End the program, terminate the program, return. Otherwise, if the word is not found, we can say system.out.println after all the loop is done, after searching all the indices, after searching for entire matrix. For example, if I have to search for black, I will search for entire matrix black. No, like I will do the entire traversal. And finally, I will say no black was found. So print false. So in the end, we can say print false. And obviously it will return because this is the last line. So this is how you are going to take the input. Only the 4 loops are remaining. Only the loops, how we have to take the loops are remaining. And this is easier than nqueen. Why? Because we will be using the nqueen code only, like similar code only. So you have to basically complete the function, which is word present. Please everyone complete the function is word present. Then I will show you. I'm giving you 4 or 5 minutes.
to complete is word present. Try for it. Try for it. I have given time to try. Do you have to only travel on metrics? Should we only travel on metrics? Those who are trying. Should we only travel on metrics? Like, for example, if I am searching for green, for example, maybe I am searching for, you can say, for Bay Free, whatever, Bay Free. So what I am doing? Should I search like this? Be found, again be found, again be found, like only travel in the matrix? Or should I search also? Should I travel also in the string? Like, do I have to travel both in the string and also in the matrix also? Like, since B is found, next character to be searched will be next character of bakery, which is A. Next character in bakery, which will be F, or bakery, which will be K. K is not found, so word is not there. In both, we have to travel. And easier one will be to travel on string, like loop will be based on string, and inside that you can run the loop on, you can update for metrics. You can update for metrics inside that. Or you can run the loop on metrics, and inside metrics you can say, inside the loop you can say, I will be running a loop on, I will be making a pointer on the string itself.
see, you can either run the loop on matrix, that is, you can run the loop horizontally. Inside that loop, you can take an index variable, which will be pointing at 0, index plus plus, index plus plus, index plus plus. Or what you can do, you can run a loop on string, g found, row plus plus, or column plus plus, whatever. Then maybe r found, like for this, g found, r plus plus, or column plus plus, r found, column plus plus, e found, column plus plus, e found, column plus plus, n found. So you can do it anyway. You can run the loop on index and you can search for the element in the matrix, or you can run the loop in the matrix and you can search for the element in the string itself. So you can do it anyway. रन टाइम नहीं आएगा, बस वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का इशू देखना है. चलो देखते हैं एक बार. should we like do this problem? Okay, first of all, I am copying the code, or let's try it from scratch only. See, we have to go in horizontally right direction. So for int, like row will be there will be column. So from which cell should we start from? Now should we start from the next cell, or should we start from the same cell? Should we start from next cell, or should we start from same cell? Obviously same cell. We have to first search for in order to search for brown, we have to search for B. In order to search for green, we have to search for G also. G will be same. So search from the same cell. That is, R will be row only, C will be column only. And now do the traversal. So while going horizontally right, that is in the rightward direction, how should we do? How should we update? How should we update? We can say column plus plus, C plus plus. How should we terminate? Like when can we go out of the matrix? When column becomes n, we are out of the matrix. So when column is less than n, we are within the matrix. So int, we can say int n is equals to matrix dot length. It is a square matrix. So I'm taking n as a number of rows, number of columns, it is same. And when column is less than n, I can say I am within the matrix. In order to search for it, in order to search for the word, what should I do? In order to search for the word, should I also maintain a pointer on the string itself? Should I also maintain a pointer on string? Whether I have to search for G or R or E or E or N. कौन सा कैरेक्टर सर्च करना है ये भी तो पता होना चाहिए. मतलब अगर हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि G मिलना चाहिए इधर, या R मिलना चाहिए, या E मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए. एक पॉइंटर हमारा स्ट्रिंग के ऊपर भी होना चाहिए. I want to search for G, I want to search for R, I want to search for E, I want to check whether E is present, I want to check whether N is present. Yes or no? Should I also maintain a pointer on string, that is index pointer? Yes, I will also maintain a pointer on index. So index will be, and I will maintain the index pointer outside. So index will be initially 0, like it will be starting from the 0th character. And how should we update index? How should we update index? After every searching, we should do index plus plus. After G is present, we should now search for R. After R is present, we should search for E. After E is present, we should search for next E, next N. So next character, so index plus plus, next character. Is it possible that index becomes array dot length, index becomes string dot length, the word dot length, before matrix becomes out of matrix, like string, the character becomes, the row becomes, or the column becomes out of matrix? What I am saying, if I am searching for green, maybe, or if I am searching from, let's suppose, start from here, start, the word is start. If I am searching for start from this letter, from this S, so what I am doing, S present, T present, next index plus plus, index is A, index is A. Now we are out of the matrix. So this is one of the possible cases that we can become out of the matrix. We can become out of the matrix. What is the other possible case? The other possible case is the index, the string index can become, we can say, the last character. It can become the array dot length. It can become the string dot length. How? For example, if I want to search for maybe what? Maybe you can say DAW, like whatever, DAW. If you need to search for DAW, so what I am doing, D present, index plus plus, now search for A present, index plus plus, now search for W present, index plus plus, now index becomes array dot length, string dot length, now index becomes string dot length. Although there is matrix present,
But should I now search for C? C is equals to empty character. That is equals to string dot length. Obviously not. Like string has ended. String is ended. So can we say we have searched the matrix? We have searched the word. Search was successful. If entire word was found, search is successful. Yes or no? So let me make this again and let me erase this. What we are saying, if the search is successful, index will become string dot length. If the search is unsuccessful, we will be out of the matrix or the index will be lesser than string dot length. So we also have to check whether index is becoming string dot length also. So index should also be less than word dot length. It should also be less than equal to word dot length, and the length will be like this only. Yeah. So this is also what we have to check for. Length. Wait, is length property or length is parameter? I guess it is parameter only. Okay, so this is also we have to check. Is it clear? Like, why are we checking for this? Why we are checking whether index is also less than word dot length? Is it a parameter? No, I guess in string it is a function only. देख लेंगे क्या होगा, लेंथ फंक्शन के साथ लेना है या बिना फंक्शन के लेना है, देख लेंगे, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी. Okay, now what should I say? If my current character row comma column, if it is equals to what character should I search for? If it is equals to if it is equals to word dot caret index. Very good. Word dot caret index, the current index character, the current index. For example, if index is 0, word dot caret 0, that is G. Word dot caret 1, that is R. Word dot caret 2, which is E. So search for the character, search for word dot caret index, whether it is equal to that. If it is, okay, well and good. If it is not, so you can do break. You can break. You can say no, we should not run the loop because word is not found. Like G is not found or R is not found or E is not found, whatever. So you can break. Now you can check. If index becomes word dot length, then yes, word was there. So we can return to yes, word was there. See, this will be clear to you if I will just bring this code and I will do the try run. थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा यहाँ पे रिकर्जन वगैरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन मैं बिना रिकर्जन के समझाना चाह रहा हूँ. I am doing it using for loops only, but it will be very, very easy using recursion. I am not teaching recursion, so I am using for loops only. But I am telling you this will be even more easier using recursion. Similarly, the previous question also. Okay, so what I am doing? Let's search for DAW. Let's search for DAW. So how we are searching for DAW? We are having a pointer on the string. The index pointer, which is initially to 0. We are having a pointer initially on the character on row comma column, like where should we search for? So for example, row comma column is pointing to this element, pointing to this D. So now do what? Is the matrix of row comma column, is it equals to word dot caret index? Is a D equals to D? Yes. So do not break. It is equal. This if condition becomes false. So now search for the next character. If we are going horizontally, so horizontally means row plus plus, sorry, column plus plus. And also now we do not have to search again for D. Now again we do not have to search for word dot caret 0. Now we have to search for word dot caret 1. That is index plus plus also. So index will become 1. Index plus plus also. Column plus plus also. Index plus plus also. Now check whether A is equal to word dot caret 1. Yes, A is equal to A. So this is also equal. Now search for next letter. That is column plus plus also. And index plus plus also. So index becomes what? Index becomes 2. Now search whether the next character, the matrix of R comma C, whether it is equal to word dot caret 2, which is W. Yes, W is equal to W. So this is also found. So again column plus plus and again index plus plus. But as soon as you do index plus plus, what you are saying? Entire word was there. DAW. I need to search for DAW. I don't know what is DAW, but if I wanted to search for DAW, it was present. So when index becomes 3, when index becomes array dot length, when index becomes word dot length, break out. And if index is word dot length, yes, the matrix contains DAW word. It contains, so return true.
Is it clear? For search successful? Search successful. Okay. Now there are two cases for search unsuccessful. There are two cases for search unsuccessful. Let's write the two cases for search unsuccessful. What are those two cases? For example, if I am searching for bakery, what will happen? If I am searching for bakery. So initially index will be here. Initially index will be 0. This is 0th index. This is first, second, third, fourth, fifth. Word is of 6 length. And initially, let's suppose the row comma column is pointing to this B. So is B equals to B? Is a matrix of R comma C? Is it equals to string dot char at 0? Yes. So now go to the next element in the same row. Is A equals to A? Index plus plus also. Yes. Is F equals to K? No. No. So break out. If it is not equal, so break out. Is index word dot length? No, index is 2 only. Like if we have searched for entire word, index will become word dot length if entire word was present. But since entire word was not present, only B and A were present. K was not present. Instead of K, there was F. So I can say no, it is not present. So it should not return true. Is it clear? This you can say unsuccessful search. If index is not a word dot length, obviously word is not found. अगर इंडेक्स आखिरी इंडेक्स के बाद नहीं पहुंचा, हम इंडेक्स प्लस प्लस कब कर रहे हैं? जब हमें पता चल रहा है कि बी प्रेजेंट है तो इंडेक्स प्लस प्लस कर दो, ए प्लस प्लस कर दो क्योंकि ए मिल गया, एफ प्लस प्लस कर दो मतलब इंडेक्स प्लस प्लस कर दो क्योंकि एफ मिल गया, इंडेक्स प्लस प्लस कर दो ई मिल गया. So when we are doing index plus plus, when we are searching, when we are able to search for the word, so when index remains as 2, when index remains less than 6, we can say that character was not found. Obviously index is not found, word is not found. Is it clear for bakery? Why are we saying if index is equals to word dot length, only then return true? Okay. So let's also do for start. The word is start. So for start, what we are doing? 0, 1, 2, 3, 4. Initially, the index is 0. Okay. Index is on string. Initially, let's suppose the word is at this S. Word is as this S. So S equals to S. Very good. Very good. S equals to S. Do not do anything. It is not equal. It is equal. This if condition becomes false. Column plus plus, index plus plus. Column plus plus, index plus plus. Is it T equals to T? Yes, very good. So column plus plus, index plus plus. Empty character, like out of the matrix. Columns becomes N, out of the matrix. Break out. Is index word dot length? No, index is not word dot length. Index is at 2. Entire word was not there. Start was not there. Only S was there. Only T was there. कुछ था ही नहीं इसके बाद. यहाँ पर क्या हो रहा था? B was there, A was there, K was not there. Instead of K, there was F. What is happening here? S is there, T is there, nothing is there. So these are two kind of cases where we can say unsuccessful search. Is it clear? Unsuccessful search. या तो अगला कैरेक्टर मिले तो वो सेम ना हो, या फिर मिल जाए तो हो ही ना. अगर मिल जाए तो अलग हो, और या तो मिले ही ना. ये दो केसेस हैं. या तो अगला कैरेक्टर ही ना मिले मैट्रिक्स में, और अगर मिल भी जाए तो सेम ना हो तो अनसक्सेसफुल सर्च है. बात समझ आ रही है? बट सर लूप के बाहर इस इंडेक्स 0. यस, अगर 2 बार ब्रेक हो भी गया तो लास्ट कंडीशन में तो 0 ही है ना. नहीं, हम लूप में क्या कर रहे हैं? हम लूप में इंडेक्स प्लस प्लस कर तो रहे हैं. तो इंडेक्स प्लस प्लस हर बार हो रहा है. जैसे जैसे लूप चल रहा है, जैसे जैसे हम अगले कैरेक्टर के ऊपर जा रहे हैं, हम इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली हम जब पूरा वर्ड सर्च कर लेंगे तो इंडेक्स हमारा वर्ड डॉट लेंथ के ऊपर ही खड़ा होगा, कभी वो 0 पर तो रहेगा ही नहीं. ठीक है, और कोई डाउट? और किसी को डाउट? सर पहला वर्ड कौन सा सर्च करना है, कैसे पता चल रहा है? एक ही वर्ड सर्च करना है. ये मैंने अलग अलग टेस्ट केसेस लिए हैं, ये मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं. हमें कोई एक ही वर्ड सर्च करना है. जैसे इसमें ग्रीन सर्च करना था, ये मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूँ कि ग्रीन सर्च करना होता तो क्या होता, ब्राउन सर्च करना होता तो क्या होता, कैट सर्च करना होता तो क्या होता. आई हैव टेकन डिफरेंट एग्जांपल्स. इज इट क्लियर सौरभ राज? ओके. Any other doubt or is it clear how we are searching?
This is for only right direction. Similarly, we have to do for the remaining directions. The similar thing we have to do for remaining directions. सर रो कॉलम की वैल्यू तो सेम ही है ना, रो कॉलम की वैल्यू, हाँ रो कॉलम वैल्यू तो वो है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो रो एंड कॉलम इज दिस सेल ओनली. इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेल, रो एंड कॉलम इज दिस सेल. You can have 4 different functions and you can update the row and column itself. 4 अलग अलग फंक्शन बना लो और चारों फंक्शन में रो और कॉलम को ही अपडेट कर दो, वो भी ठीक है. वैसा कर दूं अगर वैसा चाहते हो तो. 4 अलग अलग फंक्शन बनाए. Should we make 4 different functions or should we only write all the 4 loops in the same function? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, एक ही में सही है. ऐसे ही अच्छा है. Okay, so should I now write the remaining code, remaining vertically downwards? Vertically downwards. See, this entire thing will remain same. Should we again make the index 0 before starting? Should we now again search for green only? मतलब अगर हम horizontally search कर रहे थे, horizontally यहाँ पे search करा, bakery नहीं मिला, तो अब vertically search करोगे तो फिर वापस B से start करोगे या फिर जो कैरेक्टर नहीं मिला के वहां से सर्च करना स्टार्ट कर दोगे. B was present, A was present, K was not present. So now will you start the traversal in vertical order by K only, from K only, or again from B, again from 0, again from 0th index? That's why what I am saying, again update the index as 0. That is again start from 0 only, again start from the 0th index only, again start for the entire string, search for the entire string. Now going downwards, only one thing you have to change is, since we are going downwards, row should be less than n, row plus plus. Going downwards means row plus plus, row plus plus, row plus plus. Rest remaining things will remain same for vertically downward. Is it clear? Vertically down. Now, similarly for down right, down also, right also. So combine both the things, like column should also be less than n, row should also be less than n, index should also be less than word dot length, row plus plus also, column plus plus also, down and right, both down and right. So both down and right, that is row plus plus also, down and right also, column plus plus also. And index we are already doing, index तो already कर ही रहे हैं. देखो ये मैंने एक ही लूप, एक ही फॉर लूप में सारा कुछ एक ही में लिख दिया. अगर आप अलग अलग लोगे, वाइल लूप लोगे तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा. समझ पा रहे हो या ब्रेक करके दिखाऊंगा? तीनों चीजें एक ही में कर रही है मैंने. समझ आ रहा है? रो ऑल्सो, कॉलम ऑल्सो एंड इंडेक्स ऑल्सो इन द सेम फॉर लूप. Okay, now for the last case, the last case is down left, which is index will start from 0, down left, row comma column, it will start from left, going towards left. So what are the two walls which we can hit if we are going towards left, down left, like this? Either we can hit the bottom wall or we can hit the left wall. So left wall, column should be more than equals to 0 and row should be less than n. Row should be less than n, column should be more than equals to 0. These are the two conditions, either the left wall or the bottom wall. Rest, I guess everything will remain same instead of column plus plus, because we are not going towards right, we are going towards left. So column will become minus minus, left means minus minus. I guess remaining things will remain same most probably. Let's see. Let's run the code. And there is some issue also. There is some issue. This is not comma, there is semicolon. See, between initialization, termination, and updation, there should be semicolon. Initialization, termination और updation के बीच में semicolon आना चाहिए. Initialization के बीच में comma आना चाहिए. Within initialization, comma should be there. In between initialization and termination, there should be semicolon. This is important. Initialization और termination, initialize करना, terminate करना और update करना, इन तीनों के बीच में semicolon. और initialization के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल ले रहे हो तो कॉमा, कॉमा, within updation, comma, within termination and operator or operator, whatever. So here should be not comma, it should be semicolon. Between termination and updation, it should be semicolon. It should be semicolon. Okay, let's run it again. And
It is not int, it is char. It is char. One more error. Okay. So matrix. It is not matrix, but it is MAT. Okay, so the code was large. The code was pretty. You can say there were 4 loops and we have to check for each cell, but now it is getting accepted. I am sharing the code in the discussion. Please read the code. I am giving you 5 to 6 minutes. You can take more time also if you want, because this is very, very, very important. Trust me. If you will do this problem currently, it will be very easy when you will be doing recursion. So I have shared the code in the discussion. Let me share it inside the code only. Again, posting the code. Okay, so I have shared in the code format, and I am also bringing the code in the open board. So this is the word present or not. 4 different loops. And this is the input output. ये कोड पता है इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि इनपुट आउटपुट भी हमें लेना पड़ता है. अगर इनपुट आउटपुट हमें ना लेना पड़े ना तो कोड छोटे हों थोड़े. हैकर रैंक पे इनपुट आउटपुट हमें लेना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है. डर मत जाना कि इतने बड़े बड़े कोड लिखने पड़ेंगे एक्चुअल में. हाँ मतलब थोड़ा सा तो बड़ा है लेकिन इतने भी बड़े नहीं है. सिर्फ यही लिखना पड़ेगा आपको और ये वाला लॉजिक. मतलब ये आप बोल सकते हो ये लॉजिक है. अभिषेक सर पहले लूप में जो दोबारा बोलना दोबारा. सर पहले लूप में हॉरिजॉन्टल राइट में जो लूप चल रहा है वो r इक्वल्स टू रो c इक्वल्स टू कॉल. तो मतलब n की पावर अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो 4 से चल रहा है 44 से. मतलब जो भी नहीं, ये रोज नहीं है. मतलब ये मैं हर सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस सेल से पूछ रहा हूँ क्या आप 13 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो रो और कॉलम 0,0 पास कर रहा हूँ. क्या 13 से ग्रीन स्टार्ट कर सकते हैं सर्च करना, तो रो और कॉलम क्या पास कर रहा हूँ 0,1. कैन आई स्टार्ट ग्रीन सर्चिंग फ्रॉम हियर, सो रो विल बी पास 0, कॉलम विल बी पास 2. ये यहाँ पे हो रहा है. हम सारे सेल से स्टार्ट कर रहे हैं पूछना. कैन आई स्टार्ट द ट्रेवर्सल फ्रॉम योर सेल, कैन आई स्टार्ट द ट्रेवर्सल, रो विल बी योर रो, column will be your column. If the word is present from your cell, okay, true. So ये रो एंड कॉलम सारे सेल्स से ट्राई कर रहे हैं, ईच सेल से. ये रोज और कॉलम्स नहीं है. अच्छा ठीक. रोज और कॉलम्स तो n है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक. ठीक है, बात समझ आई है अच्छे से. हाँ सर आ गया. ओके रुद्रा. हेलो सर. हाँ हाँ सर ये जो मेन मेथड के हम अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स के अंदर हम केवल पहला कैरेक्टर फाउंड करने के बाद फंक्शन कॉल करें तो उससे क्या होगा, और ऑप्टिमाइज नहीं हो जाएगा मेरे को? बिल्कुल फॉर ऑप्टिमाइज हो जाएगा. अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बस अंधाधुन लगा रहे हैं कि भाई ग्रीन यहाँ से मिल रहा है क्या. लेकिन बेटर क्या रहेगा, पहले पूछ लें भाई तू जी है ना, तो ही ग्रीन यहाँ से मिल सकता है, वरना तो मिलेगा ही नहीं. लेकिन बात Yes. सेम है, मतलब कोड की टर्म्स में बात सेम है. हाँ आप टाइम के टर्म्स में बात करोगे तो थोड़ा ऑप्टिमाइज लगेगा, थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि पहले हम Yes. कॉल लगा रहे हैं, फिर वहां से रिटर्न आ रहा है चारों लूप लगा के, फिर फायदा नहीं है ना. भाई लूप लगाओ, ये मत डायरेक्टली यहाँ से पूछ लो भाई जी तो नहीं है वो, तो जी है तो ही लगाओ, जी नहीं है तो मत लगाओ. यस. कर सकते हो. ओके सर. सनी कॉलन तो मैंने कभी भी नहीं बोला यार. सेमी कॉलन बोला था. सेमी कॉलन बिंदी, ये जो भी है ये वाला. देखो क्या है ये चीज. दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज टर्मिनेशन, this is updation. So within initialization comma should be there, within termination and operator or operator should be there, within updation comma should be there. Increase the column also, increase the index also, initialize r also, initialize c also.
check for termination of column, whether column is within the matrix, and check for index is also within the matrix, like within the string. So for within the initialization, within the termination, within the updation, comma or and operator will be there, comma and operator or operator, whatever. But within, like in between initialization and termination, there will be semicolon. Between termination and updation, there will be semicolon. Syntax: for loop, initialization, semicolon, टर्मिनेशन सेमीकोलन अपडेशन. अब बस इनिशियलाइज एक वेरिएबल ना करके दो वेरिएबल कर रहे हैं, तीन वेरिएबल कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग वन वेरिएबल, वी आर इनिशियलाइजिंग टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, सो ऑन. For example, here we have initialized two variables. Here we have initialized three variables. Sorry, not here, but where? Yeah, we have updated three variables, not initialized, but updated three variables. R also, C also, index also. कोड को छोटा करने के लिए करा बस, लूप के अंदर भी कर सकते थे. देखो यार, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, सिली मत सोचना कि सिली डाउट है. कोड बड़ा है, क्वेश्चन अच्छा है. अगर चाहते हो ड्राई रन एक और बार करना तो मैं एक और बार भी कर सकता हूँ. अभिषेक, कुछ पूछना है या पहले का ही है हैंड रेस? सर एक बार जैसे यहाँ से इस वर्ड वाले से जीरो गया और वर्ड गया. हाँ. फिर इस वाले अब मान लो वर्ड ग्रीन है, तो पहले हमने बोला जीरो और जीरो से स्टार्ट कर दो, मतलब 0,0 को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो उस वर्ड का ग्रीन का. क्या 0,0 से कोई ग्रीन मिल सकता है किसी भी डायरेक्शन में? हाँ, तो फिर यहाँ पे अगर पहले वाला जो इफ है इससे यहाँ से फॉल्स आया, फिर वो वर्टिकल डाउन पे जाएगा. यहाँ से हमें फॉल्स मिला, मतलब उसने कॉल लगाई, पहले राइट गए, राइट नहीं मिला, राइट गए, राइट नहीं मिला, मतलब यही जी नहीं था, राइट नहीं मिला. फिर डाउन चेक करा, डाउन भी नहीं मिला. फिर डाउन राइट चेक करा, फिर डाउन लेफ्ट चेक करा, तो चारों से ही नहीं मिला. यहाँ से भी नहीं मिला, यहाँ से भी ट्रू नहीं गया, यहाँ से भी ट्रू नहीं गया, यहाँ से भी ट्रू नहीं गया, यहाँ से भी ट्रू नहीं गया. तो हमने क्या बोला, नहीं मिल रहा, फॉल्स, फॉल्स दे दो. तो अगर यहाँ से ट्रू आ जाता तो मिल गया. चारों से ही ट्रू नहीं आया, मतलब ट्रू नहीं आया इस पूरे फंक्शन से, तो अगले इंडेक्स से स्टार्ट करो. मतलब अब 0,1 से स्टार्ट करो ग्रीन को ढूंढना. 0,1 से, मतलब इस वाले सेल से अब स्टार्ट करो ग्रीन को ढूंढना. क्या तेरे से स्टार्ट हो सकता है ग्रीन? राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, डाउन राइट, समथिंग लाइक दिस. ठीक है बात समझ आई है? हाँ सर. ट्रू नहीं मिला तो आगे जाते रहेगा, रिटर्न फॉल्स. डाउन लेफ्ट वाला लूप रिपीट कर दो, डाउन लेफ्ट वाला. ठीक है, डाउन लेफ्ट वाला लूप रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. डाउन लेफ्ट वाला. See, for example, if the matrix is like this, A, B, C, D, P, P, L, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. This is the matrix, and we need to search for, sorry, you have to say, you asked for down left. Should I show for down right or should I only show for down left? अभिषेक, डाउन लेफ्ट के लिए दिखाऊं या डाउन राइट के लिए भी चलेगा? चलेगा, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, इफ द वर्ड टू बी सर्च्ड इज एप्पल, इफ द वर्ड टू बी सर्च्ड इज एप्पल, so obviously first we should search for each character. Can I start apple from here? Can I start apple from here? Can I start apple from here? From each index from the matrix, I will start the apple traversal. I will start for the traversal. Can I start from you? Apple is there. If it is, so return true, print true. I have found apple. Otherwise, start from the next cell. Maybe from next cell we can start apple. We can start the next cell as apple starting point. So what we are doing, for example, if we are starting the apple traversal from 0,0, from 0,0. So what we are doing, first searching for horizontally right. First we are making, okay, we need to search for apple. So let's make a pointer on apple. Let's make a pointer on 0. Search for A. Is A present? Yes. Matrix of R, C is equals to A. Since we are searching in right, so go towards right. Is there P also? Yes, there is P also. Sorry, there is no P. It is B. It is not equals to P. So break. Is the index equals to word dot length? No, index is only 1. It is not equals to 6 or 5, whatever. What is the word dot length? 5. It is not equals to 5.
Apple was not present in horizontal. Okay, let's search for vertical. Maybe let's search for vertical. Again, make the index 0. Now search for vertical. Again, start from 0 only. Again, start for A only. Is there A? Yes. Is there P? No. It is F. Maybe let's suppose if it was P. Again P. No, there is D. So again in the vertical also not present. Now what we are doing? We are searching for down right. Now listen very carefully. What we are saying? Index again 0. Index start again from A. Row will start from same row. R will start from same row from which we have to search from. Column will be the same from which we have to search from. Since we are going down right, that is in the right and towards the down. So we can go out of the matrix from right wall or we can go out of the matrix from down wall. या तो नीचे इतना जाएंगे कि भाई नीचे से ही बाहर निकल जाएंगे या फिर राइट इतना जाएंगे कि राइट से बाहर निकल जाएंगे. It can be anything. So what we are saying, column should also be less than n. We should be within the right wall and we should be above the bottom wall. We should be within the matrix. So if we are within the matrix and if word is still to be searched, like there are some characters present which are still to be searched, so search for that word. Search for that word. If it is not found, break. But if it is found, search for next word in the next cell. Next cell means row plus plus, column plus plus. That is go diagonally right. Row plus plus, column plus plus, go diagonally right. And search for next character. That is now search for P. Now search for P. So what we are doing? If I undo this, now what we are doing? Now search for P. Is there P? Yes. Row plus plus, column plus plus. That is go diagonally right. Diagonally right. Is there next P also? Yes. Row plus plus, column plus plus, index plus plus. So index plus plus, row plus plus, column plus plus. That is go to L. Is there L? Yes. So it is not equals. No, it is equal if condition becomes false. Right also, down also. E. Yes, E is there. So finally, again, row plus plus, column plus plus, and entire word is there. Index becomes word dot length. So is it clear how we are going for down right? Down right कैसे जा रहे हैं? अभिषेक, ठीक है सर. मेन फंक्शन में प्रिंट फंक्शन के बाद रिटर्न के प्लेस में ब्रेक यूज कर सकते हैं? नहीं, वहां पे ब्रेक यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या करेगा, वो फिर हर रो में अगर बार बार मिलेगा तो बार बार ट्रू प्रिंट करेगा. अगर आपने ब्रेक लिख दिया तो वो सिर्फ ब्रेक क्या करता है, वो सिर्फ अंदर वाले लूप से ब्रेक होएगा. अगर आपने ब्रेक लिखा तो आप क्या बोल रहे हो, सिर्फ इस लूप से ब्रेक कर जाओ और बाहर वाले लूप को दोबारा चलाओ. मतलब जहां से चलाना था वहां से चलाओ दोबारा. मतलब बाकी बची हुई सारी रोज के लिए अगर वो दोबारा से मिलेगा एलिमेंट तो दोबारा से प्रिंट कर देगा. मतलब अगर लेट्स सपोज आपको सर्च करना होता KU, और KU तो नहीं, लेट्स सपोज आपको सर्च करना होता सिर्फ S, तो S यहाँ पे भी है, इस रो में भी है, सिमिलरली इस रो में भी है, बहुत सारी रोज में, तो वो बार बार ट्रू प्रिंट कर देता बार बार. तो उसको ना करना हो इसलिए हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा. मतलब ना तो इस वाले लूप से ब्रेक करो ना तो इस वाले लूप से ब्रेक करो, प्रोग्राम से ही ब्रेक कर जाओ, प्रोग्राम से ही टर्मिनेट कर जाओ. ठीक है रजत? और सुदीप्ता एंड एक और जना, एक दो जन जो बोल रहे थे ड्राई रन करवा दो. समझ आया? ये अभी छोटा सा ड्राई रन करवाया जो. ठीक है. देखो ये हमेशा रहेगा, मतलब ये पूरा बाइनरी सर्च भी कर लो, पूरा डीए से आगे तक लास्ट तक कर लो, ग्राफ तक. मैं ये ग्राफ तक की गारंटी ले रहा हूँ. ग्राफ तक ये रहेगा भैया, मतलब सर भैया जो भी आप बोलते हो या अर्चित जो भी आप नाम से बोलते हो, कि आपके समझाने के बाद तो हल्का फुल्का दिमाग में घुस जाता है, आपके समझाने से पहले तो पहले ही नहीं पड़ता, मतलब क्वेश्चन ही क्या था समझ नहीं आता. ये रहेगा, ये लास्ट टॉपिक तक रहेगा. कैसे? अगर मैं ग्राफ्स भी खोल के दिखा दूं ना, तो ग्राफ्स में एल्गोरिथम्स होती हैं. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ already discovered, already invented algorithms. For example, there is breadth first algorithm, depth first algorithm, there is cycle detection algorithm, there is topological sort, there is graph coloring algorithm, there is Dijkstra algorithm, Bellman-Ford and whatnot. Like there are hundreds of algorithms. So if already like some scientist performed or invented that algorithm taking some years, and I am teaching you in 1 hour or in half hour,
So how is it possible that you will get it in the first attempt? Is it not like it is not obviously possible? पहले अटेम्प्ट में आपको एल्गोरिथम समझ आ जाए, पहली बार में ही मैं समझाऊं और आपको पल्ले पड़ जाए, पूरा दिमाग में घुस जाए, या खुद से ही समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, तो मजा ही आ जाए ना। तो आप ही साइंटिस्ट हो नेक्स्ट, आप ही इंडिया के नेक्स्ट जो भी बोलना है, नंबी नारायण, वो जो भी नाम था वो पहली बार में समझ नहीं आएगा, पहली बार में समझ नहीं आएगा, दिमाग में नहीं घुसेगा। मैं जब पढ़ाऊंगा खुद से, जब ड्राई रन करोगे घर जाने के बाद, मतलब क्लास के बाद, और सबमिट करोगे तो ही पल्ले पड़ेगा, और तो भी गारंटी नहीं है कि एक बार में हो जाए, एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। देखो, अगर 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख की जॉब चाहिए, फ्री में तो नहीं मिल रहा, फ्री में तो नहीं मिलेगी। मतलब ये तो है नहीं कि भाई मैं तो साइन करके आया हूँ बॉन्ड, जो भी था एग्रीमेंट साइन करके आया हूँ कि मैं पढ़ूंगा, मतलब मैं लाइव क्लासेस में आऊंगा, जॉब दिलानी इनकी गारंटी है। ऐसा थोड़ी ना होता है, बताओ ऐसा सोच के आए हो क्या कि मैं तो बस साइन कर दिया, जॉब दिलानी इनकी गारंटी है? मैं तो बस कूल कूल करने आया हूँ, मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मे बी वो पढ़ रहे हो। प्लीज अनम्यूट मी सर। शरद, ठीक है, शरद कुछ पूछना है? शरद, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Sir, what if we didn't put index less than order dot length terminating condition? See, if you are searching for example, DAW, as I like did a dry run, so I will do again a dry run. Maybe not for DAW, but maybe for if you want to search for ferry, FERY. So what you will do? You will, let's suppose, start from here. Let's suppose row is here, column is here. So F is present, okay. E is present, okay. R is present, okay. Y is present, okay. Now I, like, what should I compare I with? The string which I wanted to search is complete. String is becoming, index is becoming word dot length. I want to search for ferry. Ferry is there. So what should I compare I with? There is nothing. What should I compare B with? What should I compare R with? If word was found, I should return true. So that is what I am doing. If index is becoming word dot length, no need to start, like no need to do further traversal. We can just break. We can say yes, word is found. Yes, word is there. Okay, sir. सर बाइनरी एग्नोस्टिक क्या होता है? पता नहीं यार, क्या क्या शब्द बोलते रहते हो, इस तरह की शब्दकोश मेरे सामने मत लाया करो। ठीक है, तो अपने आप को कोई भी इंफीरियर मत समझना यार, कि ये मत सोचने लग जाना कि मेरे को तो कोडिंग ही नहीं आती थी और यहाँ पे तो पता नहीं क्या ही एडवांस चीजें चल रही हैं। ट्रस्ट में, ये एडवांस नहीं है। पहली बार में जिसको कोडिंग आती भी होगी ना, उसको भी ये एडवांस लगेगा। मतलब पहली बार जब मैंने ये सब करा था, ऑल दो मैंने 11th 12th में C++ कर रखी थी, लेकिन मेरा ये पल्ले नहीं पड़ रहा था भाई, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे हो, कैसे रहा ये, कुछ समझ नहीं आता था। एंड ऑपरेटर क्यों लिया, और क्यों नहीं ले लिया, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, भाई ये फॉर लूप एक ही में क्यों घुसा दिया भाई, दो दो लूप्स क्यों नहीं ले लिए, वाई वी हैव नॉट टेकन 2 लूप्स नेस्टेड लूप्स, वाई वी हैव ओनली टेकन 1 लूप। ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में, तो ही कुछ आगे बढ़ पाओगे। अगर क्वेश्चन इन दिमाग में आ रहे ना कि ये एक ही लूप में क्यों करा, 2 लूप में क्यों नहीं करा, तो फिर मतलब क्यूरियोसिटी नहीं है तो फायदा नहीं है। आप कैसे सब समझ गए भाई? ड्राई रन करके यार, ड्राई रन करके पेन एंड पेपर हाथ में लिया, समझा क्लास के बाद, मतलब क्लास तो मैंने ली नहीं, मैं तो यूट्यूब से पढ़ता था, लेकिन वो वीडियो देखी, उस वीडियो देखने के बाद समझा भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कौन सा वीडियो? पेप कोडिंग, जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहीं से मैंने पढ़ा है। सुमित सर हैं माय गुरु, तो उनसे पढ़ा है मैंने यूट्यूब से। हाँ जी, सुमित मलिक। वॉट एवर आई एम टूडे, आई एम बिकॉज ऑफ हिम। मतलब उनकी वजह से मैं टीचिंग में आया हूँ।
सर आपको कितना टाइम लगा ये सब समझने में? 1 साल मान लो। अब 1 साल में मतलब ये नहीं है कि भाई 1 साल बाद ही कुछ हो पाएगा, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है। ऑब्वियसली मैंने जॉब ले ली, जॉब लेने के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब इंटर्नशिप मैंने ले ली सेल्स फोर्स में, उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा स्क्रैच से एडवांस तक। जॉब भी मिल जाएगी, मतलब जॉब लेने के लिए आपको पूरा एडवांस तक टॉप लेवल का बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बेसिक आता हो, इंटरव्यू देने स्टार्ट करो। किस्मत की बात है, 20 इंटरव्यू दोगे उसमें से एक निकल जाएगा, 20 देने पड़ेंगे। ऐसा मत समझना 2 दूंगा 2 में से एक निकल जाएगा। मेरे दोस्त हैं कितने सारे कॉलेज में, इतना पढ़ रखा है तब भी उनके मतलब 10-10 इंटरव्यू 15-15 इंटरव्यू उन्होंने दिए, तब जाके एक क्लियर हुआ है। किस्मत अच्छी हुई तो पहले में ही निकल जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन यही आएगा। अभी हमने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा है, वो पूछ लेंगे। मर्ज सॉर्ट वो पूछ लेंगे, क्विक सॉर्ट जो कि हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बस इतना ही पूछ सकते हैं, मतलब वो मर्ज सॉर्ट पूछ लेंगे। अब आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद रह गया इंटरव्यू, और याद रह गया तो निकल गया इंटरव्यू। इतना ही रहता है, इतना लक फैक्टर रहता है। लेकिन ऑब्वियसली लक उसी को फेवर करता है जिसने पढ़ी हो, जिसने पढ़ा हो। भाई जिसने मर्ज सॉर्ट पढ़ा होगा उसी के लिए तो लक अच्छा है। जिसको मर्ज सॉर्ट ही नहीं पता होगा, जिसको सिलेक्शन सॉर्ट ही नहीं पता होगा, उसके लिए किस बात का लक? बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम्स को आप कितने टाइम में रिवाइज किया आपने? देखो रिवाइज में ज्यादा टाइम लगा, पहली बार पढ़ने में तो वही है कि जैसे जैसे वीडियो चलती रह रही है, गो विद द फ्लो भाई। वही है ना कि ना ना पता था खुद के इंजीनियरिंग में आना है, तो सब ले रहे थे इंजीनियरिंग तो ले ली, सब जेई पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया, सबने डीटीयू लिया, मतलब आसपास के लोगों ने तो ले लिया। सिमिलरली सब बोल रहे थे कि भाई कोडिंग डीएसए करनी है तो कर रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि यार इतना सब पढ़ लिया दिमाग में से तो सब कुछ निकल चुका है भाई। स्ट्रिंग भी पढ़ लिया, एरे भी पढ़ लिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, स्टैक एंड क्यू। फिर बाद में पता चल रहा है यार सब कुछ तो दिमाग में नहीं रहा। फिर जो पढ़ा उसको दोबारा पढ़ा, जो ऑलरेडी पढ़ रखा था उसको दोबारा पढ़ा। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करवा देता हूँ उतने ही ढंग से कर लो तो इनफ रहेगा। फटाफट सबमिट करो यार, अब तो मोटिवेट कर दिया। हर दिन कुछ ना कुछ मोटिवेट कर देता हूँ। 33 सबमिशंस। चलो कल का देखूं, कल वाले में कितने हैं? 49। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर आउट ऑफ दीज 49, 50% of submissions will be just copy paste only, 50% at least. It may be 70-75% just copy paste submissions. In the next question, is the only difference between square matrix and rectangular matrix? Is it like that? In crossword 2, like I can see the only difference is, I guess, instead of square matrix now it is a horizontal matrix. Sorry, a rectangle matrix. अगर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है तो कर लोगे खुद? Can you do it on your own? If the only difference is instead of a square matrix, it is a rectangular matrix. That is, number of rows and number of columns are different. Only the termination condition will be different. That is, instead of column less than n, it will be column less than m, the number of columns. Okay, you did general and submitted code for both. That is good.
So should I skip this? Should I skip the crossword too? Only difference is instead of square matrix, instead of same number of rows, same number of columns, it is different rows, different columns. Or it can be also same, but at least you have to take input differently. For example, 10 rows or 14 columns. So rectangle matrix. Okay, so I am sharing the next problem. Next problem will be count all palindromic rows. And by the end of module 2, you will be pretty much good for specialist programmer role of TCS. Like you will be good, you will be worthy of 7, 8, 9 package, 7 lakh, 8, 9, 8 lakh, 9 lakh packages after end of module 2. आप इतने वर्दी हो जाओगे कि महीने के 60, 70, 80 हजार रुपए कमा पाओ. फर्क इतना ही होता है, ट्रस्ट में फर्क इतना ही होता है. अगर कोई जैसे आप में से कोई अगर थोड़ा बेटर रोल क्रैक कर लेगा, 7, 8, 10 लाख का, 15 लाख का, या फिर और भी अच्छा, तो आपको 70,000, 80,000, 90,000 इतने मिल रहे होंगे. और जो अच्छे कॉलेज से निकलते हैं उनको लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 इतने ही मिलते हैं. टैक्स वैक्स कटने के बाद इतना ही फर्क रहता है. तो बहुत ही अच्छा सेटअप है. यहाँ से ऊपर मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है. इसको सीरियसली ले लेना, ठीक है. मजाक मजाक में मत लेना. TCS, I guess TCS or maybe Infosys, I don't know. Infosys specialist programmer और TCS specialist programmer, I don't know. TCS में शायद से पावर प्रोग्रामर होता है और Infosys में स्पेशलिस्ट होता है, ऐसा कुछ होता है. जो भी होता है, जो भी होता है, TCS में डिजिटल होता है. ठीक है, डिजिटल ले लो. अब्दुल रजाक ने क्या बोल दिया? अब्दुल रजाक ने क्या बोल दिया? मेरे को तो मैसेज नहीं दिख रहा. ठीक है, सो let me make a matrix. Till then, please read the problem, and those who have not submitted the previous problem, please submit the previous problem. I am making a matrix. जिन्होंने इस टाइम में पिछला प्रॉब्लम सबमिट नहीं किया वो कर लो, और जिन्होंने कर दिया वो ये वाला प्रॉब्लम रीड कर लो.
ठीक है, अच्छी बात है। नमन, तो नमन ले लेते हैं। पुशअप, नील, नितिन, मुकेश। Okay, so should I describe what is the problem? Should I describe what is the problem? Have we done palindromic string? क्या हमने palindromic string कर रखा है? नहीं करा, ठीक है। So first, let us see what is a palindromic string. What is a palindromic string? A string which is same when we read it from left to right and when we read it from right to left. It is a palindromic string. For example, if we take madam, so if we read it from left to right, it will be M-A-D-A-M, madam. And if we read it from right to left, it will be still M-A-D-A-M, madam only. So yes, it is a palindromic string. If we take radar, R-A-D-A-R, is it a palindromic string? If it will read the same from left to right, right to left, yes, it will be. So R-A-D-A-R, R-A-D-A-R, yes, it is also a palindromic string. If I will take, let's suppose, Adda, whatever, Daru ka Adda, whatever. So is it a palindromic string? Is it a palindromic string? Yes. A-D-D-A, A-D-D-A. Yes, it is a palindromic string. Any other string? Maybe M-O-M, mom. Is it a palindrome? Is it a palindrome? Yes. M-O-M, M-O-M. So all these are valid examples of palindrome. Is a ABC, AB a palindrome? ABC, AB, yes or no? Yes. ABC, AB, yes. Yes. Very good. ठीक है, थोड़े नशे कम क्या करो। ABCAB, BACBA, BACBA, ABCAB, BACBA. Obviously not. It is not same from left to right, right to left. So some more examples. POLAP, POLAP, POLAP. From left to right, it will be POLAP. From right to left, it will be PALOP. AOOA. Obviously not. So is it clear what is a palindrome, what is not a palindrome? Malayalam, very good. Like Malayalam, M-A-L-A-Y-A-L-A-M. From backward, it will be M-A-L-A-Y-A-L-A-M. Same. So there will be like hundreds of strings which are palindrome. Rotor, sagas, whatever. Wow. सैफ अली खान का कायक होता है, कयाक होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हाँ, कयाक लिख दो, मेरे को क्या पता चल रहा है। Noon, noon is also a palindrome. Race car is also a palindrome. R-A-C-E-C-A-R, R-A-C-E-C-A-R, race car. So how to check whether a string is palindrome or not? How to check? Is it clear what is a palindromic string? How to check? In this given matrix, I have taken the strings which are palindrome. Obviously, string will have same number of rows, same number of columns. So I cannot show any 4 length string. There can be even length strings also. This is an even length string. There can be more even length strings also. Any other example of even length string? Even length palindromic string? Okay, by string के देना examples. Google. Even length palindromic strings. कोई आप ही बता दो। इवन लेंथ, जिसमें इवन लेंथ के कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, ऐसा कुछ। मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल। अरे भाई मीनिंगफुल। मैम आप लोग बोलते हो, असली वो मैडम होता है। ओके, नून इज देयर, N-O-O-N, N-O-O-N, noon is there. Any other thing? Nitin is there. Nitin is odd. 5 लेटर है यार, कैसे नशे करते हो? Okay, Anna is there. So these are even length.
Even length can also be palindrome, odd length can also be palindrome. First thing is this. What you have to do, you have to, in this particular question, you have to count the number of rows which are palindrome. So for example, this is palindrome, this is not, this is yes, this is yes, this is no, this is yes, this is no. Blue one are no, yellow one are yes. So you have to count how many palindromic rows are there. 1, 2, 3, 4. So you have to print 4. So only question is how to check whether a string is palindrome. And like in the question, it is not a string, but it is a integer. Only this much changes there. But question will be interesting. Question will be interesting only if string is there. तभी समझ आएगा, तभी अच्छे से पता चलेगा. Integer लूंगा तो समझ नहीं आएगा. Okay. So how to check if MADAM or let's check MALA YA Malayalam LAM. How to check if it is a palindrome? And similarly for कोई थोड़ी लंबा 6 कैरेक्टर का बताना, कोई स्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम हो, 6 कैरेक्टर्स का, 6 कैरेक्टर्स, कोई स्ट्रिंग 6 कैरेक्टर्स का कोई पैलिंड्रोम बता दो यार. आगे से पीछे से सेम आ रहा हो. हाँ. कौन सी आवाज निकल रही है? ये रेडर क्या है भाई? क्या है ये? REDD यार, पता नहीं क्या है ये. कुछ ढंग का वर्ड बता दो यार, वरना छोटा ही लूं. मतलब कुछ भी वर्ड बताओगे, क्या है इसका मतलब बताना. उदित कोई थोड़ा मेरे जैसे गरीब वाला इंग्लिश वर्ड बता दो जो गरीब जैसे को समझ आ जाए. चलो यार, PULLUP ले लो. खुश. So this is a English word which is a palindrome. Even length. This is a even length palindrome. Even length palindrome. This is a odd length palindrome. Odd number of characters, even number of characters. Only slight change will be there. Like code will be same, but logically there will be a slight change in between these two cases. And let me take the cases where the string is not a palindrome. So for example, string is MA or maybe ABC, AB, something like this, and similarly ABCCA. So these are not palindrome. This is not palindrome. This is not palindrome. Okay. So how to check? If the string reads same as left to right, right to left, how to check? Any idea? Other than Rishikesh, other than Naval? नवल और ऋषिकेश के अलावा किसी और को हैंड रेस करना हो? बताओ भाई. 2 पॉइंटर लिख तो दिया, समझा तो दो मुझे. अभिषेक. सर लास्ट कैरेक्टर को चेक लास्ट करें. कैरेक्टर को फर्स्ट एंड लास्ट को चेक करेंगे. अगर दोनों इक्वल है तो ठीक है. इक्वल है, फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट पॉइंटर को, लेफ्ट को प्लस प्लस और राइट को माइनस माइनस करें. कब तक ये काम करेंगे? जब तक लेफ्ट. देख लो चैट, देख लो. नहीं, चैट नहीं देख रहा. ठीक है, मैं वर्ड देख रहा था. ठीक है, कोई नहीं. चलो, सही बताया जितना भी बताया. तो एक लेंगे हम लेफ्ट पॉइंटर, एक लेंगे हम राइट पॉइंटर. वी विल टेक 2 पॉइंटर टेक्निक. व्हाई? If we are searching for the word whether it is same from left to right, right to left, obviously 1 pointer we have to make it left, 1 pointer we have to make it right. If it is same from left to right, right to left, first character should be same as last character. Second character should be same as second last character. Third character should be same as third last character. Fourth character should be same as fourth last. Fifth character should be same as fifth last, but fifth is the same as fifth last. Like it is same index. It is actually same. Obviously the index is same, so obviously the character will also be same. By left भी यही है, right भी यही है, तो character तो same होना ही होना है. Now should I continue more? Should I say sixth is same as sixth last,
7th is same as 7th last, 8th is same as 8th last, but it is pretty well understood. If this is second last. Obviously, if this is 8th, this is 8th last. So is it same? Is it same? Should we check for both? Second same as second last and 8th also same as 8th last? Or we can only check for second same as second last, like only this same as this only. See what we are going to do. We are just going till half. Why? Because if we are searching for these characters, whether they are same as these, obviously entire string is palindrome. So left, are you same as right? Is the leftmost character, is the first character, is it equal to right character? Yes, currently it is. Till now it is palindrome. Okay, so left plus plus. Now search for second character. Is it same as second last? Right minus minus. Yes, M is the same as M. A is also same as A. So again, left plus plus, right minus minus. L is also same as L. Left plus plus, right minus minus. Again, A is same as A. Left plus plus, right minus minus. Obviously, left and right are same, so it will be same. So you can stop here. You can again check whether left is same as right, and you can again do left plus plus, right minus minus. But you can say, till now if it is same, then well and good, no need to check further. They are same. It is a palindromic string. Very good. Now let's do for even length. Just one test, like one thing will be different, which is where we have to stop. Here we are stopping when left is becoming equal to right. Let's see here what we have to stop, where we have to stop. P, same as P. First character, same as last character. L plus plus, R minus minus. U, same as U. Left plus plus, right minus minus. L, same as L. But as soon as you do left plus plus and right minus minus, left and right cross each other. So if PUL is the same as PUL, obviously LUP will be same as LUP. So no need to check further. When left crosses right or when left becomes equal to right, you can stop. So here left is become equal to right because string is odd. It is odd length. Since it is even length, left will cross right. So whenever left becomes equals to or more than right, you have to stop. So you have to run the loop only when left is lesser than right. Is it clear? What are the cases for true palindromic string? Simple 2-pointer approach, left pointer, right pointer. Let's now do it for like unsuccessful palindrome, like not a palindrome. So left pointer, right pointer, A, B, not same. Return, not same. No, if it is not same till now, it will be like even if it is same for the remaining string, still not same. Like even if it was A, shall it is A, but this is not A, this is not A. Like both are not A or both are not B. So even if the remaining string is palindrome, but still left is not equal to right, the first character is not equal to last character. So it is not a palindrome. Is it clear why it is not a palindrome? False. A is not equal to B. Left is not equal to right. Yes. Okay. Now let's do it for this. Left, right. A is equals to A. Okay, well and good. Left plus plus, right minus minus. B is not equal to C. So again false. Again false. समझ आ रहा है ट्रू और फॉल्स का क्या है? सिंपल फंडा. ठीक है. ऋषिकेश कुछ पूछना है? सर ऑर्डर इवन के लिए लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू दोनों को वर्क नहीं करता है क्या? मतलब दोबारा बोलना. So for instead of checking first for odd and even, why can't we do left less than or equal to R? मतलब आप y को y के साथ ही चेक कर रहे हो, सेम इंडेक्स को सेम इंडेक्स के साथ ही चेक कर रहे हो, तो सीधा सीधा यही बोल लो जब तक लेफ्ट लेस देन है राइट के तब तक काम कर लो. तो वो इसके लिए भी चल जाएगा, वो इसके लिए भी चल जाएगा, और वो y को y से चेक नहीं करेगा. सर तो हमारा एक चेक बचता है ना सर? एक ही चेक करना है हमें, सिर्फ y लेफ्ट इज लेस देन राइट. ये चेक करने से जब इक्वल हो जाएंगे तो चेक नहीं करना, तो बाहर आ जाओ कि हाँ भाई वो पैलिंड्रोम है. मतलब चल अगर जाता है y दोनों लेस को. देन इक्वल टू राइट लिख रहे हो तो वो चेक करना है ना, इक्वल है तो लगाओ लूप, चलाओ लूप. अगर लेस देन लिख रहे हैं तो आ जाओ लूप से बाहर जब लेफ्ट और राइट बराबर है. ओके ओके. यस सर. सेम कोड से दोनों हो जाना चाहिए, बिल्कुल सेम कोड से दोनों हो जाएंगे. कर सकते हैं, कर भी सकते हो, नहीं भी
सर फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को ही चेक करके रिटर्न ट्रू और फॉल्स, नहीं यार सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को नहीं कर सकते सौरभ, व्हाई? बिकॉज हेयर फर्स्ट एंड लास्ट आर सेम बट हेयर सेकंड एंड सेकंड लास्ट आर नॉट सेम, सो यू हैव टू डू इट फॉर ऑल टिल हाफ यू हैव टू डू इट। अगर कोई भी पेयर कोई भी जोड़ी नहीं राजी तो पूरा राजी नहीं है, इट इज नॉट एंटायर पैलिंड्रोम। Okay, so I am showing you the code for one string, for one array. Actually, here it is an array, and it is not a single array, it is actually a rows. There are some rows. So I will take public boolean is a palindrome, and I will pass the row index for which row I have to check. In the matrix, actually it is not a string, but it is a integer array. So in which row we have to check whether it is a palindromic row or not. So we'll take the left and right on what? On row or column? Left and right pointers will be on row or will it be on columns? For example, if I have to check whether this row is palindrome, so row is a 2, row is 0, 1, 2, row is 2, but left and right pointers, obviously the changing thing is column. If row is fixed, the changing pointer is column. So left column 0, right column string, the matrix of 0 dot length minus 1, number of columns minus 1. So left will be 0, right will be matrix of 0 dot length minus 1, that is number of you can say number of columns minus 1. Now while left is lesser than right, if matrix of left, if it is equal to matrix of right, good. Otherwise, if it is not equal, return false. If it is not equal, return false. Then do left plus right minus minus. Check the second with second last, third with third last, fourth with fourth last. So left plus plus, second, third, fourth, right minus minus, last, second last, third last, fourth last. And if the entire string till half was good, it was palindrome. So entire string is palindrome. So return true. Return true. Is it clear? For one string, for one palindrome, for one array, not for one array, but for one row, we have to check it for all rows and we have to count the number of palindromic rows. अभी हम क्या कर रहे हैं, एक रो पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। हमें करना क्या है, हमें गिनना है भाई कितनी रोज पैलिंड्रोम है, और ये इंटीजर्स की फॉर्मेट में है 1 to 1 पैलिंड्रोम, 1 to 1, 4 5 6 नॉट अ पैलिंड्रोम, 1 to 1 yes, 4 5 6 no, 3 to 3 yes, 3 2 3, 9 8 7 no. So we have to count the number of palindromes. So first we will obviously take the input, the number of rows, the number of columns. देखो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता है, ये क्वेश्चन पैलिंड्रोम चेक करना। अब बस ये फालतू की बातें हैं कि इनपुट लो आउटपुट लो काउंट करो। क्या बात है, अटेंडेंस कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, कभी 110 से 115 हो जाती है, कभी 110 हो जाती है। So matrix we have taken the input, then we have to basically run a loop on all the rows. We have to check for all the rows whether the current row is palindrome or not. So we'll check for all the rows and we will maintain a counter variable. We will maintain a counter variable whether this current row is a palindrome or not. If the current row is palindrome, if is a palindrome, देखो दोबारा 12 हो गए, if current row is palindrome, if it is true, so do what? Count plus plus and just simply print count. Yes or no? यही तो करना है, कितनी रोज पैलिंड्रोम है तो सारी रोज के ऊपर लूप लगाओ, हर एक रो से पूछ लो आर यू पैलिंड्रोम, आर यू पैलिंड्रोम, आर यू पैलिंड्रोम, to each row we are asking, and if it is yes, so count plus plus and just simply return the count, print the count, whatever the number of palindromes are there. And a non-static something, so let us make it static. Let us do it again. Okay, wrong answer, very good. So index out of bound, rows, columns, rows, columns, rows, columns. Then running a loop on all the rows, checking the current row.
sorry, matrix of left, not matrix of left, but matrix of row comma left. Matrix of row comma left, row comma right. The rowth left, rowth right. In the current row, left element, right element. Okay, so this is the syntax. ये तो छोटा था, ये तो समझ आया है, ये तो hard नहीं था. Was is also hard. Count palindromic rows. For one row, how much is the time complexity? For a single row to check whether it is palindrome or not. In a single string, I am checking if it is palindrome. Two-pointer technique, order of n, linear, single loop, order of n. But for n rows, checking it is palindrome, Obviously, n into checking for one string it is palindrome or not. So n into order of n square. Okay. If anyone wants to ask anything in this code, they can ask me. And I'm also putting the code in the discussion. This most probably will be the last question for today. Most probably. Let me check. कितने क्वेश्चन रह गए मैट्रिक्स के? How many questions are there in matrix? Crossword 2 I have given the homework. Column rotation in matrix I have given the homework. Multiplication is remaining. Number of square matrices. So 2 questions are remaining. So tomorrow will be also matrix, and from Monday we will start from strings. And please guys come tomorrow. Class is not end currently, but please guys come tomorrow. Why? Because tomorrow we will be discussing matrix multiplication question. It is very, very, very important question. Matrix multiplication. Very hard also. Not easy. सर ये नीचे वाला लूप में फंक्शन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो अभिषेक. मैंने बस इजी करने के लिए यहीं पे लिख दिया. आप इसको एक अलग से फंक्शन में ले जाओ और ये वाला अलग फंक्शन में रख लो. 3 फंक्शन कर लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. वैसे आज की अक्षर की पहन रखी है अभिषेक. वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम भी ले सकते हो अभी वो. यार थोड़ा जोर से बोलो, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही. पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वाला पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वाला क्या प्रॉब्लम है आगे लीड कोड पे? अगले वाले पेज पे. हाँ. अच्छा, नहीं इस पे ही है, हैकर रैंक पे ही है. अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वाला पैलिंड्रोम. ये इज पैलिंड्रोम वही है. तो क्या करना है? कर लेते हैं, फिर ये बोल रहे हो? हाँ यही यस ठीक है, कर लेते हैं. अभी कर ले. शुड वी डिस्कस दिस Yes, प्रॉब्लम yes. करंटली? यस सर. बाकी लोग बताओ. होमवर्क नहीं, कभी कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट हो जाएगा. कैरेट फंक्शन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट you cannot use square bracket for strings. For strings you have to use caret function. 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट ले लो. शुभम ले लो 2 मिनट. At 9:20 I will discuss the palindromic string question. Same question, instead of array, instead of integer array, you are given a string. You have to check whether string is palindrome. Actually जो मैंने समझाया वो string के लिए समझाया था. Radar, मैडम, मलयालम. जुगाड़बाजी नहीं करनी ऋषिकेश. आप भी जुगाड़बाजी करने लग गए. जुगाड़बाजी नहीं करनी. कैरेक्टर एरर नहीं लेना. इसमें तो पूरा स्ट्रिंग एक साथ दे रखा है ना, इसमें तो स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा इनपुट.
अनिकेत कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन था, डिस्कस करना था आपके साथ। हाँ जी पूछ लो। सर एक मैंने टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि एक स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट करना था। तो जैसे मैं सर वर्ड की लेंथ से लास्ट से मतलब लूप रन कर रहा था और 0 तक। तो जो सिंगल सिंगल वर्ड थे सर वो तो प्रिंट हो जा रहे थे, जैसे हेलो का OLLEH हो जा रहा था। बट हाँ। उन्होंने सर जैसे कई टेस्ट केसेस में इनपुट में पूरी लाइन भी दी थी। तो उस लाइन में सर सिंगल सिंगल वर्ड का हमें रिवर्स करना था, जैसे माई नेम है तो YM और EMNA इस टाइप अरे में सर मतलब। एक्चुअली छोटा क्वेश्चन है, बेसिकली उसमें 3-4 क्वेश्चन है, दिखा देता यस। हूँ। देखो एरे स्ट्रिंग्स में, रिवर्स स्ट्रिंग में 3 वेरिएशन है। मतलब एक तो सिंपल रिवर्स वर्ड है, एक है सिंपल रिवर्स वर्ड, मतलब कैरेक्टर एरे दे रखा है उसको रिवर्स कर दो, HELL को OLLEH कर दो। एक है कि सिर्फ किसी रेंज में करो, सिर्फ पहले के कैरेक्टर्स को रिवर्स करो, शुरू के कैरेक्टर्स को। फिर एक है जैसा आपने बताया कि भाई ईच वर्ड को रिवर्स कर दो। ये ईच वर्ड रिवर्स नहीं है, ये बेसिकली वर्ड्स को ही रिवर्स करना है। मतलब ब्लू को उठा के सबसे आगे ले आओ, फिर इस को उठा के सेकंड पे, एस स्काई को उठा के थर्ड पे, और द को उठा के लास्ट में। एक तरीका ये है। और दूसरा इसी का वेरिएशन क्या है, एक वर्ड को रिवर्स करो, ईच वर्ड को। जैसे लेट्स को रिवर्स कर दिया, टेक को रिवर्स कर दिया, लीड को रिवर्स कर दिया, कॉन्टेस्ट रिवर्स कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब ये दोनों ही करेंगे, ये वाला भी जिसमें वर्ड्स को रिवर्स कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, ईच वर्ड को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एक और है सिर्फ वॉवल्स रिवर्स करना, सिर्फ वॉवल्स रिवर्स करना। तो ये पांचों छह क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे देखेंगे। अभी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ हुआ है? मोहित ये सरकास्टिक था या सही में मजे, मतलब सही में इंटरेस्टेड हो, सही में इंतजार कर रहे हो स्ट्रिंग स्टार्ट होने का? सही में ठीक है, अच्छी बात है। देखो, जितना आप स्ट्रिंग वगैरह के लिए या बाइनरी सर्च के लिए इंटरेस्टेड हो, उससे कई गुना ज्यादा मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बहुत तगड़ा कंटेंट बना रखा है। तो मैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोग को पढ़ा पाऊँ उतना मैं चाह रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे ऊप्स इतनी तगड़ी कर लें कि कोई भी ऊप्स का कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो हम फटाक से आंसर दे पाए। अभी आज ही मैंने इनहेरिटेंस की 2 वीडियो बनाई है, तो दोनों वीडियो 40-40 मिनट की बनी। तो मेहनत काफी तगड़े लेवल पे चल रही है। लिंक मिल जाएगा, वो एक बार पूरा होने दो, शायद से नेक्स्ट फ्राइडे तक वो पूरा हो जाएगा ऊप्स। तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, या तो यूट्यूब पे मिलेगा या तो आपको अपने पोर्टल पे मिलेगा, जिस पे भी मिलेगा देखना पड़ेगा। फिर वो पोर्टल पे, मतलब वहां से आप पढ़ भी सकते हो, और आपको लाइव क्लास में तो पढ़ाने ही वाला हूँ मैं। थ्योरी वोरी सब करेंगे, एक बुक माई शो या फिर एक नेटफ्लिक्स डिजाइन भी करेंगे, चिंता मत करो। एक तगड़ा सा प्रोजेक्ट बनवाएंगे, एक या फिर 2-3 प्रोजेक्ट बनाएंगे। ट्राई करेंगे कि 2-3 हो जाए, एक होमवर्क में हो जाए, एक क्लास वर्क में हो जाए, और एक पूरा ओप्स के बाद हो जाए। ट्राई करेंगे 3 प्रोजेक्ट्स हो जाए। एक तो बुक माई शो पक्का है, एक स्प्लिट वाइज मैं सोच रहा हूँ, और तीसरा हो सकता है आपका अ, तीसरा जो होमवर्क में जा सकता है, कुछ भी जा सकता है होमवर्क में, देखते हैं। आप मत जाना, देखो दुआ करो, मैं क्यों जाऊंगा। गीक्सर से तो मतलब वो तो मेरे को बोल रहे हैं कि ऊप्स का जल्दी कंटेंट बना दे, मेरे पास से टाइम नहीं निकल रहा है इतना। मतलब अभी मेरे मिड सेम वगैरह थे तो मैं वो दे रहा था, और अब फ्री हुआ हूँ तो दोबारा कंटेंट बना रहा हूँ।
देखो वैसे मतलब कभी भी अपने आप को किसी टीचर से बाउंड मत रखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली गीक्सचर के साथ 1 साल तक हूँ, चिंता मत करो। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी टीचर की ऐसी आदत नहीं लगनी चाहिए कि भाई वो नहीं होगा तो पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, so let's submit the question. Let's submit string palindrome or not. How to take string input? How to take string input? scn.next, and you can use anything you want because it is still a one word only. So take a left pointer initially to 0, take a right pointer. In a string, it is not length function, sorry, it is not length parameter, it is length function. It is str.length parenthesis function. And same thing, like same, left is less than right. If left character is same as right character, good. If it is not equal, if left is not equal, so return false or print false. So system.out.println, not a palindrome, not a palindrome, not a palindrome, not a palindrome. Okay, and return also. Otherwise, after you are done, that you are sure that it is a palindrome, so you can say yes, it is a palindrome. Yes, it is palindrome. And after the if condition, left plus plus, right minus minus. But the only thing is how to compare two characters instead of comparing two integers. How to compare two characters, like left character and right character. How to extract that characters. पैलिंड्रोम की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? पैलिंड्रोम हो गया पैलिंड्रोम, ठीक है। So how to extract two characters? Word or str dot char at left, str dot char at right. Instead of square brackets left, square brackets right, now it is str dot char at left, str dot char at right. That much change is there. Please take care of not with n capital, a with a small, palindrome with a p capital, palindrome with p capital. These issues are important. And my code is giving index out of bound. Why? Left plus plus, right minus minus, str dot char at left is not equal to right. So printing not a palindrome, returning, otherwise printing yes a palindrome. Yes, sorry, not str dot length, but str dot length -1, n -1. Okay, sample test case is passing. Let's submit. तो देखा, मेरे से भी गलतियां हो जाती है. आई एम ऑल्सो नॉट अ गॉड. तो मेरे से गलतियां अब तक हो रही हैं, ऑब्वियसली आपसे तो होएगी. So this is a palindrome. Is palindrome. If anyone does not have the problem link, so I am sharing the problem link again. किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, otherwise we will end the class. This is palindrome string. अभी मतलब अभी string officially start नहीं हुआ है. We have not started with strings officially. We will be starting with strings on Monday. Tomorrow we will discuss matrix multiplication and one more problem, I guess. Count the number of square submatrices with all ones. These two questions we will discuss tomorrow, and then we will start with the strings on Monday. Strings will take maybe 3-4 days or maybe 5-6 days also. Let's check how much strings. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, then again 12 questions. Okay, so there are approximately 30-40 questions, 30-35 questions. It might take more than 1 week also. Let's see. 3 टेस्ट केस पास नहीं हुए. स्ट्रिंग लिया है, I लिया है, J लिया है, while I is less than J, if str dot char at this, S palindrome false, break, else
I plus plus j minus minus else. Okay, else I plus plus j minus minus. If is palindrome is true, the print palindrome, otherwise print not a palindrome. Not a palindrome, not a. जो चीज ध्यान से लिखने के लिए बोला था वो लिख दो यार. ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना? नो वन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Crossword and NQueen hard level question, bilkul yes, they are hard level questions. Don't worry, they are not easy. I have never told them they are easy. Crossword, NQueen, crossword 2, and similarly exit point of a matrix. All these questions were hard level questions. They were hard. This is easy. This count all palindromic rows are easy. Mohit, quickly ask. Divyanshu, I will be taking your doubt tomorrow. सर जो मैट्रिक्स में 90 डिग्री वाला क्वेश्चन था सर, हाँ, उसमें हमने स्वैप किया था और सर मैंने उसको कॉलम को रिवर्स करके और प्रिंट आउट में कॉलम पहले प्रिंट करवा दिया, रो बाद में। अच्छा, और आउटपुट आ रहा है सही? जी इसका आउटपुट आ रहा है। लेकिन जुगाड़ है ना, मतलब कॉलम बाय कॉलम प्रिंट हाँ। कर रहे हो, लेकिन होता नहीं है ऐसे. वही तो सर, वही पूछना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं पे तो कौन सा वो नहीं कर सकते जो मैंने करवाया. वैसे हो सकता है, मतलब आप जो कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ और भी करना पड़ जाएगा शायद से. जो आप कॉलम बाय कॉलम चीज कर रहे हो, फिर ट्रांसपोज लेना पड़ जाएगा, मतलब कॉलम्स को रो बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट है वो आपके हाथ में नहीं है. तो या तो जो मैंने करा था वही करो. मैंने शायद से पहले ट्रांसपोज लिया था या पहले मैंने कुछ और किया था, मेरे को याद नहीं. जो भी था, आपके अगर कॉलम बाय कॉलम प्रिंट करने से आउटपुट आ रहा है, तो मतलब अगर ट्रांसपोज ले लोगे तो रो बाय रो प्रिंट करने से आ जाएगा. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो कर लेना, ट्रांसपोज ले लेना उसका, फिर वो सही हो जाएगा. चलो दिव्यांशु, आपका भी ले लेता हूँ फटाफट. हेलो. हाँ. अरे सर ये बोल रहा था, अभी ना लीड कोड पे प्रॉब्लम्स मतलब होनी तो स्टार्ट हो गई है, मतलब थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाती हैं, पर कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स वाले में लिस्ट वगैरह लिखा होता है, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं? वो अलग है, अलग मेथड है उसका? देखो, वो ना कलेक्शन सीखने पड़ेंगे, मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है. एक बार थोड़ा रीड करोगे ना तो क्या पता समझ आ जाए. लेकिन अभी के लिए वो जो पार्ट है कि वो रिटर्न करने वाला जो चीज़ है ना, वो एक बार डिस्कस खोल के देख लिया करो. और अगर 4-5 क्वेश्चनों के लिए ऐसा करोगे ना, तो मे भी समझ भी आ जाए कि क्या करना है. बस वो क्या होता है, अभी हम जो एरे बना रहे हैं, वो क्या उसका साइज चेंज कर सकते हैं हम? एक बार जो एरे 5 साइज की बन गई, क्या वो 5 साइज की रहेगी आजीवन? नहीं यार, म्यूट तो कर लेते हो. हाँ दिव्यांशु, एक बार जो तो हमने आपने 5 साइज की एरे जो बना सही दी, किया. क्या वो 5 साइज की रहेगी? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है. नहीं है ऐसा. नहीं, अगर मैंने जो हमने बना दी वो तो रहेगी. हाँ. जो अभी तक हम ये मैट्रिक्स बनाते आ रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, इसका जो रो और कॉलम है हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं, चेंज तो कर नहीं सकते इसको. जी लेकिन सर. अगर चेंज करना हो, अगर भाई ऐसा थोड़ी ना होता है रियल लाइफ में कि एक बार एक बैच ले लिया 50 लोगों का, तो 50 लोगों का ही रहेगा. उसमें से लोग निकलेंगे, उसमें लोग आएंगे नहीं. तो डायनेमिक रहना चाहिए. तो वही क्या होता है, वही एरे लिस्ट होता है, वो जो रिटर्न टाइप है लिस्ट. तो देख सकते हो उसके बारे में, सिंटैक्स देखना है मेन तो, कि उसमें एलिमेंट्स ऐड कैसे करते हैं. क्योंकि ठीक है, वो जो कल क्वेश्चन था क्यून वाला, वो ऐसे तो हो गया था, वो जब लीड कोड पे सॉल्व करने के लिए गए तो उस पे वही लिंक लिस्ट वगैरह मतलब कुछ ऐसा ही था. बिल्कुल बिल्कुल वो वही है, वो लिस्ट है. लिस्ट से आप एरे लिस्ट बना के उसको रिटर्न कर सकते हो. सिंटैक्स देख लेना, नहीं समझ आता तो कोई नहीं, बस वो डिस्कस सेक्शन से उठाओ और सबमिट कर दो. ओके सर. ओके. ठीक है सर. लेकिन थैंक यू पहले सर. ट्राई करना ऑब्वियसली. ओके सर. सर, जो फंक्शन खुद से कॉल करता है उसको रिकर्जन बोलते हैं क्या? खुद से कॉल करता है फंक्शन खुद को कॉल करता है. हाँ, खुद को कॉल, हाँ बिल्कुल. ठीक है, यही है अभिषेक. सर प्लीज शो द कोड ऑफ लास्ट क्वेश्चन. यार इतनी देर से दिखा रखा था, तब नहीं देखा. देख लो लास्ट क्वेश्चन का कोड, श्वेता.
अभिषेक इतना ही पढ़ने का मन है रिकर्जन, तो मेरी जो शीट शेयर कर रखी है उसमें खोल के देख लेना। ठीक है, so then let's end the class. Let's meet tomorrow, and please guys come tomorrow. Don't think Saturday is there, class is not there. It is not like that. Saturday, every time we have taken a class on Saturday. So bye bye. Now I am giving the class to Shreya. Bye. Okay, tell me whether I'm audible or not. Okay, Vishal, you have some doubt? Okay. यस मैम। हाँ. क्रॉसवर्ड वाले क्वेश्चन में मैम मैंने सॉल्व किया, बट टू टेस्ट केसेस फेल आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार मैं देख लूं, फिर आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है? ओके मैम। अभी मुझे मतलब मैं थी नहीं उस टाइम जब क्रॉसवर्ड क्वेश्चन हुआ था, ठीक है? हाँ हाँ, रिपीट करूंगी अभिषेक डोंट वरी. So should we proceed for revision? Okay, let's discuss this. So this was the question, crossword. Okay, so you are given a matrix of char and a string word. You have to check if the word is present in the matrix or not. Word can be in any of the following directions. The word can be horizontal from left to right. Word can be vertical. The word can be also along the big diagonal lines from northwest to southwest, or along. Basically, they are saying the word will be either lying in the horizontal range, vertical, or in both like up, down diagonals in left side also and right side also. So n cross n elements and print true if it is found. Like now I got the question. Should I first discuss it or should I first see Vishal's doubt? Okay, let's first discuss it. So in the question, it is given that you will be given some words, some set of words. Okay, in that you need to find whether green exists or not. And word, external word and more word will be given, and you need to check whether green exists in this or not. So how can we do this? You have already done in quiz, right? The concept will be the same. Just the way of implementation will differ. So if you see here, where is green? G, if you start from here, then green is found at this particular instance, right? So how we will do is one by one, we'll go to each index and check, is it equal to G? Is it equals to G? Means for a word, if you have picked up C, let's suppose, then you need to check along its diagonals and vertically and horizontal to it. Okay, according to the question. So should I discuss the code, or like you want me to discuss the logic more? Okay, let's discuss the code. So the code is here. First of all, what we are doing, input output, nobody has problem. Ma'am, हम job के लिए ready कब हो जाएंगे? 6 month को का बोला था घर वालों से, लेकिन अभी 3 month और लग जाएंगे. दीपक सी, job ready के लिए तो like 6 months तो at least लगेगा ही. Like you were also in that web development one. Web development पे भी थे आप? Okay, तो I don't know what to answer. अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, like. Okay, first discuss the question. आपकी problem बाद में discuss कर लेंगे. So let's see. We have to one by one visit at each row column value, and you have to find at starting from that particular character. Do we find the string that has to be searched? जिस वर्ड को सर्च करना है उस पर्टिकुलर इंडेक्स से जिस भी डायरेक्शन में जाना है, क्या मुझे वो वर्ड मिल रहा है? सो इफ इट इज ट्रू, इफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल रिटर्न यू ट्रू, देन इन दैट केस यू नीड टू प्रिंट ट्रू एंड रिटर्न फ्रॉम देयर. मतलब वर्ड मिल गया तो व्हाई रिटर्न हैज बीन एडेड, कि एक बार भी अगर वर्ड मिल जा रहा है, वो द ग्रिड
in the grid, if one time also you are able to obtain that particular word, then just print true and don't go for other iterations. Okay, till here everything is clear? Till here everything is clear? Let's discuss the main part of this code. First of all, we have to check in horizontal right. Horizontal right, what we have to check, does this word exist? एक word दिया रहेगा. For example, in this one, we were given green, right? So first of all, we'll go to the first vary character. First vary character. So initially you have to take like R and C has been taken, which is initialized to row and column. And what is this row and column? जिस word के लिए जिस character पे हम present हैं, जिस कैरेक्टर पे हमने ये यहाँ से रो कॉलम वैल्यू पास की है, वही रो कॉलम वैल्यू से हमने इनिशियलाइज कर दिया. ओके, नेक्स्ट यू आर टेकिंग एन IDX वेरिएबल टू ट्रैवर्स द वर्ड आल्सो. अब मुझे ये बताओ कि विल यू बी एबल टू लाइक, अगर मुझे ये सी से चेक करना है तो मेरे को एक एक्स्ट्रा पॉइंटर चाहिए, क्योंकि वर्ड से कंपैरिजन भी मुझे करना है. तो एक वर्ड के लिए पॉइंटर चाहिए होगा और ये दो पॉइंटर्स रो एंड कॉलम लाइक मूविंग for row and column, different rows and columns, ये word के लिए चाहिए होगा. करेक्ट? तो इसीलिए what we have taken extra IDX variable which will be initially pointing to where? It will be initially pointing to the 0th index of the word. Okay, then you will check whether the index where I am present at, is it equals to the word dot caret IDX, like 0th character. If we are comparing G, we are comparing, so is my present character equals to G? If it is G, then go on for next iteration. If it is not, then break. And on breaking, you will be directed where? Here. अगर break किया तो यहाँ पे no, will be directed here. Okay, and we need to check if IDX that will discuss later on. First of all, let's discuss all the for loops. So is this clear? What's happening here? जिस भी grid पे just like C है, तो C के करेस्पॉन्डिंग कुछ रो नंबर होगा, कुछ कॉलम नंबर होगा. उस रो नंबर को R में स्टोर करा लिया इनिशियली और कॉलम नंबर को C में स्टोर करा लिया. उसके बाद फिर एक IDX वेरिएबल लिया which will be initially termination part. I'll repeat wait. IDX वेरिएबल लिया which will be pointing to each character of the word which has to be searched. Okay, and one by one go on for searching whether this particular, like if you're moving in a particular direction, for example, if you started your search from C और अभी ये character, let's suppose green search करना है तो हम G पे आ गए and G got matched, तो जिस direction में आप proceed कर रहे हो ना, उसके next वाले पे जाओगे और जब तक वो match कर रहा है तब तक आपको iterate करते जाना है. जहां पे आप एक ऐसे index पे पहुंच गए which is not getting matched, you need to break out from there. Let's suppose यहाँ पे F की जगह G होता, not here, E की जगह मान लो G होता है यहाँ पे, let's suppose, तो we would have matched G with G and it got matched. Okay, we shifted once here and came to R. Now we came to R here and here also R is there. So R matched. Now we shifted once more. Here it is Y and here it is E. But in this case, what will happen? There's a mismatch, right? एक mismatch है. Tell me. Is there any mismatch? तो अभी जैसे ही mismatch होगा, will break out from that loop. Okay? Did you get this part, Abhishek? This is what we are doing here. If it is not getting matched, if there is a mismatch of the words, you need to break out. And you will be directed here. Why IDX equals to word dot length? Let's suppose we are moving in a particular direction. And moving in this particular direction, we were able to match all the instances. In that case, हमारा IDX कहाँ पे आ चुका होगा? Let's suppose we were matching for green. तो G भी match हो गया, R भी match हो गया, E भी match हो गया, E भी match हो गया, N भी match हो गया. And we once proceeded again, तो अभी IDX कहाँ point कर रहा होगा? Tell me. For loop वाली termination के लिए बोला था. कौन से for loop वाली termination? This you are asking? If matrix of RC is not equals to this, then break. You are asking this? नहीं, inside. Which inside? Unmute कर लो. Raise your hand, Abhishek. IDX is lesser than word dot length. ये चीज पूछ रहे हो, For loop के अंदर जो condition लिखी है. This you are asking. अच्छा, you are asking this entire thing. Okay.
should we dry run it for one case? तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Let's suppose. Okay. So let me see in which direction it is. Horizontal right. Okay, let's. Horizontal right, if we are moving like, so what will happen? Let's take और कहीं G नहीं है क्या? Are you able to find any other G in this? Okay. If not, this G is there. This G is there. This G is there. So first of all, what we will do, initially row column value corresponding to G will be stored in R and C. ठीक है? Let's suppose इस G का जो coordinate value है वो कुछ 4 5 है. Let's suppose, I'm just supposing, it's not correct. ठीक है? So for this G, R value will be initially 4. R value will be initially 4 and C value will be initially 5. Okay? Did you get this? ये समझ आया? उसके बाद what we will do is, ये green है ना, ये green, इसके भी 0th index पे एक ith pointer रख दिया, which is idx in the code basically, but I am taking ith pointer. Okay? Initially ith pointer इस पे रख दिया और G किस पे point कर रहा है? G का R और C किस पे point कर रहा है? Whichever grid, जिस भी cell में G stored है, उसके corresponding जो भी R और C की value, that is stored in R and C. Now what we are doing is comparing whether the character present at 4,5 in this grid. Let's suppose the name of the matrix is MAT. So R and C. If this, the character present here is equals to the character where I am present, like in the word. So what you need to do is you need to proceed further. मतलब go for the next check. अब next check मतलब क्या? कि R को बढ़ा दो. Like I को बढ़ा दो. Move I to the next index because the first index was matched, right? अभी क्या होगा? Since you are moving horizontal right, so let's say that C got increased और अभी C की value 6 हो गई. ठीक है? Now we will check if the character which is present in the matrix at 4,6, if this is equals to R, if it is so, it is capital basically. If it is equals to R where our ith pointer is pointing, then in that case we need to proceed. Else what? We need to break out from here. So let's suppose we found out G here, but like on the next index there is J, right? On the next index there is J. So there is a mismatch. We are present at R in the word. जिस word को check करना है उसमें हम R पे खड़े हैं और जिस word के लिए check कर रहे हैं that is J. So there is a mismatch, so we'll break out from here. Did you get this? Logic is clear or not? Tell me. If logic is clear, this won't be a great deal for you. R is initially, C is initially, whatever the index. अच्छा, raise. मैम ये रो कॉलम जब नीचे वाले लूप से आते हैं, वो ड्राइवर वाले कोड से 0 0 आए, 0 0 आया, ठीक है. नीचे वाले मेन फंक्शन से जो है. हाँ, तो जैसे आप 0 0 बोल रहे हो ना, तो यहाँ से रो में और कॉलम में दोनों आपने 0 0 पास किया, यहाँ से नहीं, मतलब यहाँ से. तो फिर यहाँ 0 0 आ गया, तो R में इनिशियली 0 इनिशियलाइज हो जाएगा और C में भी 0 इनिशियलाइज हो जाएगा. हाँ, और फिर वो चेक करेगा कि क्या R की वैल्यू n से छोटी है, मतलब कि जो रो है वो एक्सीड तो नहीं कर रहा है, आउट ऑफ बाउंड्स तो नहीं जा रहा है. दैट इज लाइक द थिंग हियर. अच्छा. एंड at the same time आपको ये भी चेक कर, why two conditions are there, because what, like ये वाला था ना, ये केस हम एक्सप्लेन कर रहे थे. तो क्या हो रहा था कि idx is lesser than word dot length. What if all the words got searched? सारे ही words जो आपको एक्स्ट्रा वर्ड है उसमें जितनी भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे ही मैच कर गए. तो लास्ट मोमेंट पे आप चेक कैसे करोगे कि लाइक द वर्ड इज फाउंड? जब सारे वर्ड्स मैच हो गए तो ऑब्वियसली आई एक बार R मान लो मैच हो गया, फिर E भी मैच हो गया, फिर ये E भी मैच हो गया, फिर N भी मैच हो गया, फिर I शिफ्ट करोगे तो I will be equals to this length of this word, right? अभी I की वैल्यू 5 हो गई. तो वही चेक कर रहे हैं कि अगर I की वैल्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर हो गई, लेंथ ऑफ द वर्ड के बराबर हो गई, तो इट मीन्स हमारा वर्ड प्रेजेंट है, एंड फ्रॉम देयर वी कैन रिटर्न ट्रू, which is basically this thing. And why C++? Because we are moving in horizontal right direction. मतलब रो नंबर फिक्स्ड होगा, बाकी कॉलम नंबर विल वेरी. ये बस आपको आगे ये बस राइट के लिए है, ये वाली जो लूप आप समझा रहे हो. हाँ,
ये बस सिर्फ right के राइट के ग्रिड, जो भी ग्रिड होगा उस पे जिस भी एलिमेंट के लिए आप चेक करें उसके राइट डायरेक्शन के अलोंग ही सिर्फ ये चेक करेगा. अच्छा ठीक है Got समझ this? समझ And गई there can be one more case also. One more case can be there. What if you were like present here? Let's suppose, कौन सा word लूं? Let's suppose we were present ST SN मान लो, SN करके कुछ वर्ड मैंने बोला आपको सर्च करने के लिए, ठीक है. मैं आपको बोली स्नो चेक करो, स्नो. The word instead of green I gave you snow. So when you came here, when you were checking for this S, तो ये S तो मैच हो जाएगा स्नो का. Snow's S and this S will get matched, right? yes ma'am If you're talking about horizontal right only, okay, then both will be shifted to its next value, like next index. So when shifted, the control comes here for this n, और snow में भी n पे जाएगा, right? आ जाएगा हाँ, तो फिर से मैच हो गया, स्नो का n और यहाँ का n दोनों मैच कर गया, right? Next what will happen? It will, when you increment this, will it go out of bounds? क्या अभी आप इसको इंक्रीमेंट करके किसी वैल्यू पे पहुंच सकते हो? नहीं मैम नहीं पहुंच सकते. तो फॉर दैट पर्पस, लाइक स्ट्रिंग में तो हम पूरा ट्रैवर्स नहीं कर पाए, स्नो में OW अभी भी बचा हुआ है, पर वी हैव एग्जॉस्टेड दिस डायरेक्शन, राइट? yes ma'am We have exhausted this direction. So for that purpose, this one is added. C is lesser than N. तो एक हो सकता है कि पूरा का पूरा वर्ड सर्च करके हो गया हो कि मिल गया हो, और एक ये हो सकता है कि लाइक वर्ड में हम बीच कहीं मिडवे में ही रह गए हो, बट कॉलम इज एग्जॉस्टेड. अच्छा ठीक है मैम समझ This is horizontal right direction. Similarly, you will be doing for vertical down direction. Vertical down means you will stand at a particular character. Let's suppose we are standing at A. So vertical down means downwards. Downwards. Okay. The same thing. Same, you will be taking initialization with the same row and column value which you passed from the function, and the check will be also the same, but variation will differ. How will you vary here? Tell me. यहाँ पे आप कॉलम बढ़ाते थे हॉरिजॉन्टल राइट में, पर इफ इट इज वर्टिकली डाउन देन व्हाट विल वैरी? टेल मी. रो बढ़ाएंगे मैम एग्जैक्टली, रो विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि अभी नेक्स्ट रो वैल्यू पे मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा. कॉलम वैल्यू विल रिमेन सेम, बट रो वैल्यू विल चेंज. व्हाट इट? वहां पे लिख रहे थे C is lesser than N, यहाँ पे लिखेंगे R is ठीक है, R is lesser than N because we are varying R, तो R out of bounds can go, and IDX will be the same. And one more thing, after you have taken IDX equals to 0, don't forget to reinitialize IDX to 0 here. Okay. okay And similarly, you are moving vertical down, then down right. Down right, I think it is diagonally. So if you are going diagonally from a particular character, let's suppose we are moving from this K diagonally. So what will vary and what have to be checked? If we are varying here, K से E पे जा रहे हो, तो row is also changing by 1 and column is also changing by 1. रो प्लस प्लस So how will you vary? How will you vary? Row plus plus, column plus plus. At the same time, you need to check R is lesser than N and column also lesser than N. अच्छा ठीक है मैम Is it clear? क्लियर Now, हाँ, अभी एक और check रह गया. Down left. Similarly, down left means along this direction. So abhi, if you're going along this direction, means starting from a particular element R, say you are moving H, C, T. What is varying? What is varying? All of you write in chat. R plus plus C minus minus Exactly. If you are moving from R to H, row is getting incremented by 1, but at the same time, the column is decremented by 1, right? And what extra checks we need to apply here, since it is column and varying along two directions. So I have to apply whether column is greater than equals to 0 and at the same time R is lesser than N. And at the same time, check if IDX after each iteration, you need to check if the IDX is equals to what dot length, then you need to return true. और अभी इसमें से कोई भी case true नहीं हुआ, तो you will return false. okay This question is clear. Is Vishal there now? Vishal? Vishal, are you there? Huh. You can share your screen now. Okay ma'am. My screen is visible. The Hello. screen is visible. हाँ, screen visible है.
मुझे शुरू से कोड दिखाओ, फ्रॉम इनपुट आउटपुट एवरीथिंग, क्योंकि कई बार आप लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हो. ओके, dot caret 0, word equals to row equals to 0, row is lesser than in, column is lesser than in, word present true, return else. अच्छा ठीक है, फिर वो वाला फंक्शन दिखाओ, scroll up. n equals to array dot length. Okay, idx equals to 0. R is row and column जो पास किया. C is lesser than n and idx lesser than what dot length. C plus plus idx plus plus, C plus plus idx plus plus. ठीक है, फिर अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेक कर जाओ और idx. हाँ, again the same thing, R is lesser than n. R R equals to row, C equals to column. ठीक है, R is lesser than n, idx रो इंक्रीज कर रहे हैं और idx बढ़ा रहे हैं. फिर R of RC is not equals to caret idx break. If idx equals to word dot length, return true. C R बढ़ा रहे हैं और C plus plus. कोई एरर, स्पेसिफिक एरर आ रहे हैं या टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं विशाल? टेस्ट केस फेल हो रहे हैं मैम 2. अच्छा, हिडन टेस्ट केसेस 2 फेल हो रहे हैं. यस मैम. अच्छा ठीक है. If idx equals to return true, idx equals to 0. अभी मुझे तो सही लग रहा है यार, मतलब ऐसा कुछ इशू तो लग नहीं रहा है. idx is यस lesser मैम, than. फिर भी यो 2 टेस्ट केसेस फेल ही हो रहे हैं. हाँ, if idx equals to what dot length, return true. ये लॉजिक तो मतलब बिल्कुल सही है, जो क्लास में हुआ है वही है, एग्जैक्टली सेम. यस मैम. What can be there? Shiva, what you have written? String pro input में, not just string true input में. True लिखा तो है string, line number 47. ट्रू ही लिखना है ना कि कुछ और लिखना है? कैपिटल टी तो नहीं लिखना है ट्रू का? नहीं मैम, ट्रू ही लिखना है. अच्छा, तो बाकी केस में if it is not so, लॉजिक तो पूरा सही लग रहा है यार, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? रिटर्न फॉल्स. शिवा, क्या व्हाट यू आर सेइंग? इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा? कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया है? वो तो स्ट्रिंग की तरफ प्रिंट करा दिया है सिर्फ. मैम लास्ट वाला लूप c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वही तो किया है, c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. r प्लस प्लस. C माइनस माइनस. हाँ, c माइनस माइनस तो c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा. सही बात है. idx प्लस प्लस. idx इक्वल्स टू व्हाट, ये भी सही है. रिटर्न फॉल्स. ब्रैकेट्स वगैरह एक बार चेक किए है ना? सब सही है ना? यस मैम, सेम ही है पूरा. अच्छा ठीक है. अगर ब्रैकेट मिक्स रहते तो एक बार, हाँ हाँ, एक बार क्वेश्चन दिखाना मुझे. ट्रू if printed, otherwise print false. What will happen? अच्छा मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम हो रहा है? लाइक ओपन योर इनपुट वाला जो फंक्शन है वो दिखा है. लाइन नंबर 40 में कॉलन अपडेट नहीं किया शायद. कौन सा लाइन नंबर 14? इनकी भी बात. अरमान से इसकी लाइन नंबर 14 में अपडेटेड है वैसे तो, बट लेट मी सी. बताओ क्या होगा कि अगर वर्ड प्रेजेंट होगा. अच्छा, यू आर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वर्ड प्रेजेंट नहीं रहा तब फॉल्स रिटर्न करना है. और अरमान जो बोल रहे हैं वो भी कर लेते हैं. लाइन नंबर 14 में कॉलन अपडेट नहीं किया शायद. लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 दिखा ना? 14
14 रो प्लस प्लस ही करना पड़ेगा ना मैम? हाँ रो प्लस प्लस 2 participants raised hand. शिवा, हाँ शिवा, मैम यहाँ पे देखिए जो ट्रू है इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग कौन में सी लिया लाइन पे? है। मैम इनपुट कौन? करनी चाहिए। वो तो स्ट्रिंग में प्रिंट ही करा रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ट्रू प्रिंट करा रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो ट्रू रिटर्न किया, तो आप जो बोल रहे हो वो भी सही होता अगर वो उसका डेटा टाइप वो होता स्ट्रिंग होता तब। हाँ अभी इसका डेटा टाइप ट्रू, ट्रू तो सिर्फ ऐसे ही प्रिंट करा रहे हैं, अगर ऐसे लिख देगा तो कुछ होगा नहीं, मतलब एरर आएगा फिर। ओके। नो मैम, वो रो के लिए लिया है, मैं गलत हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, सब सही लग रहा है। यस Why मैम, test? मैं भी यही चेक कर रहा था बहुत देर से। बाकी और किसी को कुछ समझ में आ रहा है? Where Vishal is doing mistake and I'm also not able to find out. Anybody? Caret IDX सही तो IDX equals to 0 हर लूप के पहले किया है ना? मुझे तो पूरा सही लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई बहुत छोटी सी मिस्टेक होगी जो दिख नहीं रही है, आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस। लास्ट लूप में कॉलम -1 करके देख लो। नहीं कॉलम -1 नहीं होगा। एक बार फिर से रन करना विशाल, मतलब फिर से ट्राई करो। If false is returned, again two test cases failing. क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 10 equals to everybody else present here, you also debug. देखो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब वेरी स्ट्रेंज दिख नहीं रहा है क्या प्रॉब्लम है। ऑल तो मैं डिबगिंग बहुत जल्दी कर लेती हूँ, बट आई डोंट नो यार क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं कर पा रही। lesser than C++, okay. IDX equals to what length? My नाम I think SOPL में direct true or false लेना है शायद। SOPL में डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स लेना है, तो चाहे वैसे लो चाहे वैसे लो, बात बराबर ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, स्ट्रिंग में लो चाहे बिना स्ट्रिंग के लो वैसे तो। बट ट्राई कर लो जब सब बोल रहे हैं एक बार विशाल, व्हाट कैन वी डू, लाइक अगर दिख नहीं रही है प्रॉब्लम तो। वैसे कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे, बात बराबर। विशाल डू वन थिंग, सेंड दिस कोड टू मी ऑन स्लैक, ठीक है? नहीं, मुझे एक एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है, वैसे तो देख रही हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार जो क्लास पे कोड हुआ था उससे कोई मैच कर देगा क्या, एक एक लाइन? अभी विशाल इज शेयरिंग हिज स्क्रीन एट द सेम टाइम, सम ऑफ यू someone please like match with it. Just see. Actually I'm in hostel, so कभी कभी हो जाता है, that's why unwanted noise.
सिंपल ट्रू ही लिख लिया अभिषेक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एट द सेम टाइम अभी मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू हियर। विशाल यू सेंड मी दिस कोड, ओके, आई विल टेल यू। अभी मैं क्लास के बाद ही तुरंत बता दूंगी देख के। Yes, I'm in hostel, Arman. So let's discuss the next question. Which question was the next one? Yes, I'm currently pursuing my BTech. I'm in final year. Okay, the next question is crossword 2. Next question is crossword 2. The word can be horizontal from left to right. The word can be vertical from top to bottom. Word can be along any diagonal. I think here the difference is, like instead of one square matrix, here you will be given a rectangular matrix, right? सिर्फ यही difference है। तो इसमें क्या चीज change होगी? Can somebody tell me? क्या कोई बता सकता है? Exactly the code will be, आपकी वॉइस देखकर डर लगता था कि आपकी एज बहुत है, बट अब पता लगा एज बहुत है। नो यार, अभी तो फाइनल ईयर पे गई हूँ। सो टेल मी, नो प्रॉब्लम, अभी अगर आपको लेट नहीं हुआ है, यू कैन डू इट। लाइक सॉफ्टवेयर ऐसा, ये ऐसी फील्ड है कि आप किसी भी एज में अगर आप यू आर एबल टू रियलाइज कि, तो आप पढ़कर कर सकते हो। नो प्रॉब्लम इफ यू वर नॉट एबल टू डू ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, बट now you can do. Mohit, what you were asking, which course? You are asking what I am pursuing right now. Acha, I am doing BTech. BTech, na? Okay. So can somebody, acha, theek hai. Stop other discussions. If you have questions, you can ask me in the last 5 minutes. Okay. Here, आपको किसने गाइड किया? मैं खुद से ही करती थी, YouTube वीडियोस देखकर। एक इंट्रो दे दो मैम। ओके, what intro you want basically? You can post your questions, I will just answer it. किसी ने मुझे गाइड नहीं किया था, I just like एक सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, that's all. My full name is Shreya Pandey. एजुकेशनल एज तो नहीं बता सकती। एजुकेशनल एज 20s, like not 20s also, 20 के एग्जैक्ट 20। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही बीटेक कर रही हूँ। बीटेक तो हमारी भी हो गई, बट कुछ बात है, तो मैम ऐसा नहीं हो सकता कि इस क्या लिखा अभिषेक, ऐसे आपने डीएसए स्टार्ट कर दी, किसी ने तो बताया होगा है। हाँ, लाइक क्लास सेकेंड ईयर में आई थी तो यूट्यूब वीडियोस वगैरह काफी देखती थी, तो फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड ईयर तक तो आई आल्सो डिडंट स्टडी, बट थर्ड ईयर आई स्टडीड एंड recently I have also cracked Amazon. So college name, it's, I don't know whether you know this or not, Madan Mohan Malviya University of Technology. It's in Uttar Pradesh. LinkedIn पे देख लेना यार, जो देखना होगा, ऐसे क्वेश्चंस यू कैन आस्क, लाइक
Okay, link I'll share. Wait. Okay, so I have shared the link of my LinkedIn. In which year, Asmail, I'm in final year, like just went into final year. From 15th, I have my mid-sem exams also. So let's quickly discuss the questions. We have some more questions to discuss. Past minute. Arman, just now I said, like, I was also placed from my college, but because I cracked like Amazon off campus, so I had to leave that. So, abhi. Is there any background noise? Tell me. Like अभिषेक, बहुत बड़ी बात नहीं है जो अभी just you should have logic building, I would say. वहां रटने वाली कोई चीज काम नहीं आने वाली. This you just understand at this moment. मुझसे Amazon में कोई भी ऐसी चीज नहीं पूछी गई थी जो आप रट के बता सकते हो. और you raised your hand. 1 minute. हाँ. मैम जैसे आपके कितने इंटरव्यू हुए? यार मैं सच बताऊं, मैंने सिर्फ अभी तक 4-5 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें से अमेज़न में बस Amazon में तो इंटरव्यू तो मेरा एक ही हुआ था, दैट आल्सो इन पर्सन हुआ था, मुझे दिल्ली जाके देना था. डीएससी के ऊपर ही. हाँ, एंटायरली डीएसए. और मेरे से एक ट्री का क्वेश्चन पूछा था और एक बाइनरी सर्च प्लस ग्रीडी एल्गोरिथम होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था. लाइक द इंटरव्यूअर. तो बस इतने में अमेज़न में हो गया. अरे तो क्वेश्चंस इजी नहीं, मतलब इजी क्या मैं बोलूं, लॉजिक बिल्डिंग वाले पूरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मेरे एकदम नए थे, मैंने कभी सुना भी नहीं था उसके आसपास, मतलब वैसा क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं था. वहीं पर बैठ के मैं पूरा सोची शुरू से लेके लास्ट तक. और आपको इंटरव्यू ना बीच बीच में हिंट भी देता रहता है, आपको बस पकड़ने आना चाहिए कि इंटरव्यू आपको हिंट दे रहा है. अच्छा तो मैम और फ्रंट एंड बैक एंड इस सब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू नहीं हुआ? फ्रंट एंड बैक एंड देखो, ये जैसे Amazon और ये सब कंपनीज होती है ना प्रोडक्ट बेस्ड, वो इंटरव्यूज में ये सारी चीजें नहीं पूछती. बहुत डीएसए तो लाइक उनका मैंडेटरी है, 90% डीएसए पूछेंगी. कुछ केसेस में 10% वो डीबीएमएस ओएस ये सारी चीजें पूछ लेती हैं. लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में हाँ ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, पूरा अच्छे से, लाइक स्टार्टिंग से एंड तक. आपको प्रोजेक्ट पे व्हाट यू हैव इम्प्लीमेंटेड, इवन अ सिंगल बिट कैन बी आस्क्ड. और किसी पे लाइक बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है इंटरव्यू कि आपसे क्या पूछ लिया जाए. बट इफ यू आर गोइंग इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो डीएसए तो 90% श्योर है कि आएगा. ओके जब मैं आपने प्रोजेक्ट बताया कि प्रोजेक्ट आना चाहिए, वो हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड वाला प्रोजेक्ट बोल रहे हैं ना? देखो ये होता है ना कि आप वहां जाओगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि, मतलब मैं ये प्रोडक्ट बेस्ड की बात बता रही हूँ, जो स्टार्टअप्स और ये सब सर्विस बेस्ड होती है ना वो सब पूछ सकते हैं. मैं मैंग कंपनीज की बता रही हूँ, मैंग नहीं मतलब प्रोडक्ट बेस्ड में. तो वो आपसे, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया किसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, तो आपने प्रोजेक्ट में क्या लॉजिक यूज किया है, क्या कौन सा वेरिएबल किस लिए यूज किया है, और आपके प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. आपको सिंटैक्स नहीं आता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावास्क्रिप्ट में आपको ये चीज फंक्शन कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया कोई बात नहीं है, बट लॉजिक क्या है उसके बिहाइंड, आपने ऐसा किया क्यों उसी फ्रेमवर्क को चूज किया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. और वैसे मैं बताऊं तो फ्रंट एंड पे ही बेस्ड मेरे प्रोजेक्ट्स थे, कोई ऐसा हाई फाई टेक स्टैक पे वर्क नहीं किया मैंने. बट क्योंकि डीएसए लाइक
था मेरा ठीक ठाक, तो ओके। मैम, हाउ डिड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? लाइक इंग्लिश पे कभी काम नहीं किया। आई एम फ्रॉम मिशनरी स्कूल। आई एम फ्रॉम अ मिशनरी स्कूल, तो हमेशा से वी यूज टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्रॉम स्कूल टाइम, तो आदत बनी हुई है। कौन से प्रोजेक्ट? मेरे प्रोजेक्ट्स बेसिकली वो रिएक्ट फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, बस कोई ऐसा खास सा टेक स्टैक नहीं यूज किया है। Any more questions? और भी क्वेश्चंस पूछना है? या दैट्स इट? अब क्वेश्चन डिस्कस कर ले। मैम, किसी दिन एक लेक्चर स्केड्यूल कर दीजिए आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। रोशन, वी आर इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है। मैं सच बताऊं, जो अभी आपको गीकस्टर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस जिस ऑर्डर में, आप उसको बस मतलब अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन लेके कि क्यों स्टार्ट किया था, उस मोटिवेशन से हमेशा पढ़ते जाइए और इसी चीज को अच्छे से पढ़ जाइए। आप क्यों क्या चीज कर रहे हैं ये चीज समझते जाइए। और अगर आप बोलोगे तो मैं मतलब दूसरे सेशन में कुछ दिनों बाद कुछ लीड कोड क्वेश्चंस भी कराना शुरू कर दूंगी। तो उतने चीजें अगर आप कर लोगे तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगी। और उसके बाद ट्राई टू लाइक अप्लाई फॉर द एलीट बैच, जो एलीट बैच में चीजें पढ़ाती है ना। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े ना, तो यूट्यूब पे आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। एलीट बैच ऐसा होता है, मान लो कि आप एलीट बैच नहीं क्रैक कर पाते उसका टेस्ट, तो भी आप बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप स्ट्रिंग बाइनरी सर्च तक कर लो, लाइक मॉड्यूल 2 कर लो। उसके बाद इफ यू विल से आई विल लाइक ऑलरेडी शीट्स वगैरह शेयर्ड हैं क्लास में, आई थिंक उसे बस देखिए। और क्या मैम, मैंने गलती से एमटेक का एडमिशन ले लिया है गवर्नमेंट कॉलेज में, क्या मैं छोड़ दूं? बहुत प्रेशर देते रहते वो लोग। यार अजमेर, आई डोंट हैव लाइक आइडिया अबाउट दिस एमटेक। तो लेकिन होता यही है कि एमटेक के बाद भी आप कंपनीज में अप्लाई करोगे, बीटेक के बाद भी वही करते हो। एमटेक पे हाँ सिर्फ एक ही टीचिंग वाला जो प्रोफेसर वाली एक करियर होती है, वो एक आपके लिए हो जाता है। तो अगर परस्यू कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंटिन्यू करिए। प्रेशर तो देखो थोड़ा झेलने की आदत बनाना पड़ेगा, व्हाट वी कैन डू। मैम, मुझे अब जेलेसी हो रही है क्योंकि आप परसुइंग रहा था। कोई बात नहीं, जेलेसी की बात नहीं है। वर्क हार्ड, यू विल ऑल्सो गेट प्लेस्ड। मैम, जॉब कब मिलेगी? जब आप पढ़ोगे तब जॉब मिलेगी। जब आप मॉड्यूल 2 कर लोगे और कंपनीज के लिए अप्लाई करोगे जो गीकस्टर प्रोवाइड करता है एटलीस्ट, तो उसमें तो आपको मिल जाएगा, अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हो तो। हाउ टू अप्लाई मैम? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। यार टेलीग्राम वगैरह पे ना बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, ऐसे कोडिंग ग्रुप्स वगैरह, तो उसमें पोस्ट होता है। बस आपको एक्टिव होना है टेलीग्राम पे। चिट चैट वाली चीजें नहीं, पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो चीजों पे आपको ध्यान देना है। और मैं तो जितना अप्लाई करती हूँ वही से देख के अप्लाई करती हूँ। बहुत सारी ग्रुप्स है, अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ के लिंक भी शेयर कर दूंगी आपको कल। बहुत ज्यादा बोल दिया मैम आपने आज आपकी प्लेसमेंट के बारे में। डिप्रेस्ड, अगेन आई एम सेइंग, डिप्रेस नहीं होना है। जस्ट हैव सेल्फ मोटिवेशन व्हाई यू स्टार्टेड, और उसके बाद फिर पढ़ते जाओ। और कोई ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है कि मैं बोल दूं ये शॉर्टकट है, ये वो है, यू कैन ऑप्ट फॉर यू कैन गो देयर। बोल दूंगी तो आई विल बी लाइंग, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस और ट्राई रन और अंडरस्टैंडिंग, यही 3 थिंग्स आर देयर व्हिच कैन हेल्प यू टू लैंड इन अ गुड जॉब, फॉर अ गुड जॉब। मैम, क्वेश्चन के अलावा ये ठीक है, क्वेश्चन के अलावा ये सारी बातें भी शेयर कर दूंगी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैम, एमसीटी टेस्ट कैसे क्लियर हुआ? शिवा, आपका एमसीटी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ क्या? शिवा, आपका एमसीटी क्लियर? ओ, एमसीटी क्लियर नहीं हुआ तो ऐसे बहुत टफ क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए थे मेरे हिसाब से। और आप पढ़ने में भी सही हो, मतलब क्लास में रिस्पॉन्ड करते हो, मेरे क्लास में तो करते हो। मतलब डाउट सेशन में आप नहीं रहते शायद, पर इस पे रहते हो। दूसरे सेशन में तो आप रिप्लाई भी करते हो। आई डोंट नो।
प्रैक्टिस करो यार, मतलब एक बार में ना चीजें नहीं आती, एक बार में मुझे भी कभी नहीं आता था शुरू में। आई ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ डिमोटिवेशन, बट होता है ना कि शिवा, अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप सेम क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करो मॉड्यूल 1 से, जब तक वो आपका उसका बेसिक, उसका लॉजिक आपके दिमाग में अच्छे से लाइक बैठ न जाए, तब तक वो क्वेश्चन करते जाओ 2-3 बार। तो जब वो चीज हो जाए, करोगे ना प्रैक्टिस, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू एमसीटी टेस्ट ऑल्सो। ओके, अभी बहुत सारी बातें हो गई और क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तो एंड टाइम इज ऑल्सो ओवर, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर नाउ फॉर टुडे एटलीस्ट। कल से आके we can continue. Okay, should I end now? Should I end now? Like ये सारी बातें ठीक है कि टाइम वेस्ट लगा? जैसे भी टाइम वेस्ट लगा लिख दो, so that I'll not. सागर, what you are saying? Yes, ma'am. हाँ, टाइम वेस्ट लगा। ठीक है, let's end. Okay, class end. Okay, let's end the class. मैम मेरा वो सवाल आंसर सुन नहीं पाए। अजमेल रिकॉर्डिंग में सुन लेना। अजमेल जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। मैं ये बोल रही थी कि अगर आपने एमटेक में एडमिशन ले लिया है तो नो नीड टू ड्रॉप, यू कैन कंटिन्यू, और एमटेक के साथ साथ अपना डीएसए भी यू कंटिन्यू, बिकॉज लाइक एमटेक तो ठीक है हेल्प करेगा आपको, पर क्या बोलते हैं, अगर आप डीएसए करते जाओगे तो एमटेक के बाद और भी कंपनीज होती हैं, उसमें आप अप्लाई करो और हो जाएगा। थोड़ा प्रेशर होता है, आई नो, थोड़ा मैनेज करना, बट डीएसए, और वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि थोड़ा डीएसए पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है? Now should I stop? Okay, let's end the class. Let's meet tomorrow. Bye bye. Good night.